9th वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ साइंस रिलीजन एंड फिलॉसफी इसके द्वितीय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की जो द्वितीय सत्र की थीम है वो है रियलाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैता, द फिलॉसफी ऑफ साइंस, ओम टेंड्स टू ई इक्वल टू mc स्क्वायर। अद्वैत यानी नॉन ड्युअलिटी। इन इंडियन ट्रेडिशन वी हैव ऑलवेज सेड, हमने ये नहीं कहा कि वो एक है, हमने कहा वो दो नहीं है। वी से इट इज नॉन ड्यूअल। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट इट इज नॉट in multiples, it is not in numbers, we say it is non-two, not two, that is non-duality. शंकराचार्य जी ने उसे अद्वैता। सो इसी थीम के ऊपर का आज का सत्र है। आज इस सत्र में हमारे साथ है डॉक्टर संजय उपाध्याय जी, जो कि एमिनेंट राइटर, फिलोसोफर, थिंकर and advisor MITWPU Pune. We have got Dr. Deepak Ranade. He is a very famous neurosurgeon and author of Speaking Tree column in Times of India. आप सभी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे बीच है ऑनरेबल प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी जी, who is वाइस चांसलर ऑफ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी. We have got Honorable Dr. Vilas Vedantiji. Very soon he will be joining us. He is former MP as well as renowned thinker of Ayodhya, Uttar Pradesh. And of course, our revered founder, Professor Dr. Vishwanath Karad sir, and Vilas Vedantiji will be soon arriving. So before we begin the session, we take that moment. We will begin with the Om meditation. In the morning also, Honorable Shri Indresh Kumar ji spoke about the concept of Ma pranayama. So he said that कि माँ का मंत्र को ही हम प्राणायाम बना ले। तो किसी भी मंत्र को अगर हम बार बार जपते हैं तो वो उसकी जो संस्कृति है, उसका जो एक ताकत है वो बढ़ जाता है। But the Om is the powerful seed mantra. It is not only the mantra, it is the primordial mantra. तो जब हम ओम का भी नाद करते हैं, so it is that we are invoking the cosmic energy, and with that vibration when we become one, we actually resonate with that energy. We become in sync with that. We become a part of that divine. But that is not a thought, that has to be experienced. So जब तक हम हमारे ऑनरेबल गेस्ट और यहाँ पर और पधारते हैं, तब तक हम एक 2-3 मिनट का ओमकार का एक ध्यान में सम्मिलित हो जाते हैं. इट विल बी क्वाइट रिलैक्सिंग, रिफ्रेशिंग ऑल्सो. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली सिट डाउन, सेटल डाउन इन यूर सीट्स प्रॉपरली. प्लीज टेक यूर टाइम, सिट डाउन. मोबाइल्स थोड़े से अगर संभव हो तो थोड़ा बाजू रखें, इफ पॉसिबल. डिफिकल्ट बट पॉसिबल. So please keep your mobiles away and close your eyes gently. And you also participate. You also chant along with the musical note of Om. So I request to kindly play Om. Thank you. Thank you. Please welcome
Honorable Dr. Vishwanath Karad sir. Please welcome Honorable Dr. Vilas Vedantiji. Please welcome all the guests up on the stage. I request Dr. Vishwanath Karad sir, Vilas Vedantiji, Hare Ram Tripathi ji to kindly come up on the dais, please. स्वामी योगी अमरनाथ जी सर थोडं समोर बसा. नितीन सरांना योगी अमरनाथ साहेबांना बसवा समोर. तालियां की जोरदार बौछार होनी चाहिए. डॉक्टर रामविलास वेदांती जी यहाँ पधार रहे हैं फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑन नॉन ड्यूअलिटी. थैंक यू. सो स्वागत है सभी आज के महान विभूतियों का. I request Dr. Govind Palkar to please come and join the stage. So Govind Palkar ji, आपका हार्दिक स्वागत है. Please come up on the dais from this side, please. He is a renowned ENT surgeon, so please welcome sir. Thank you so much. And because we are a little bit running late on time, so just we have concluded the Omkar meditation. So as per the tradition of MITWPU Pune, we are now felicitating our guest. So may I request Honorable Dr. Vishwanath Karad sir to kindly felicitate our chief guest and chairman of this session today, Honorable Dr. Vilas Vedantiji, former MP and renowned thinker, Ayodhya, Uttar Pradesh. So please have a huge round of applause for Dr. Vilas Vedantiji, the former MP of BJP. Now we request Honorable Dr. Karad sir to kindly felicitate Honorable Dr. Deepak Ranade ji. He is a famous neurosurgeon and author of Speaking Tree, Times of India column. So please have a huge round of applause for Dr. Deepak Ranade ji. May I request Honorable Dr. Karad sir to kindly felicitate and welcome Dr. Sanjay Upadhye ji, who is a orator, writer, Gappashtakar and many more. Also advisor to MIT World Peace University. And now may I finally request Honorable Dr. Karad sir ji to kindly felicitate and welcome Dr. Govind Palkar ji, who is a famous ENT surgeon and a philosophical writer.
Thank you very much. Before we begin the session, let's watch a theme vision of this session, that what is this realizing unity concept of Advaita. Om tends to E equal to mc square. We all know the Einstein's energy equation of E equal to mc square. But what is its connectivity with the Om, and how Om tends to E equal to mc square, and what all this theme is all about. So let's watch a 2-minute video on the theme of this session. Please play the video. This session is based on realizing the concept of Advaita, non-duality, the philosophy of science, that is Om equal to E equal to mc square. The most famous scientific equations of Albert Einstein, E is equal to mc square, has been showing the pathway to the world community at large in understanding the most scientific principles and laws of Mother Nature and life. However, now the above-mentioned equation Om equals E equals mc square is found to be much more revealing, and further, it is certainly going to give an appropriate understanding and insight about the role of science and spiritual, religious components of life. In fact, the very equation Om equals E equals mc square truly reflects the manifestation of consciousness, the invisible energy of force which binds the entire universe together, and naturally, it symbolizes the ultimate reality, the ultimate truth, Almighty, the God. This clearly shows that science and spirituality go together to reveal the true nature of the universe. In this session, we will discuss the Om and Advaita philosophy, which is basis of Indian spirituality. Thank you very much. And before we invite our first keynote speaker, I just have a humble request for everyone that kindly keep your attention on the dais. Please listen to the words of wisdom from the great speakers. Number 2, the request is for the guest speaker himself or herself that in the paucity of time, in order to keep all the sessions apprised, because many guests have to leave at their particular time of their departure for the air travel, and so please keep the watch on the timer given to their left, and please keep your session as per 12 to 15 minutes of time allocated to you. So the first keynote speaker is our very own Dr. Sanjay Upadhye. He is a philosopher, writer, thinker and actor. He is a magician, he is a director, he is a gapashtakar, and he is so many things all compact in one. So ladies and gentlemen, please help me welcome with a huge round of applause Dr. Sanjay Upadhye. नमस्कार। भोजन का आनंद लेने के बाद अब आनंद का भोजन शुरू हो जाएगा, और भोजन पश्चात का जो ऑडियंस है इज वेरी डिफिकल्ट ऑडियंस, पोस्ट लंच ऑडियंस. It takes a lot of time to attract him. I request everyone here, all the speakers, to pronounce the word Advait, not Advaita. The actual pronunciation is Advait, it is not Advaita. But we have a bad habit of pronouncing it with the A. Have you heard somebody saying Newtona? Have you heard somebody saying Shakespeare? We call them Newton only, we don't say Newtona. Come on, then the Indian words also be in the right pronunciation. अद्वैत क्या है ये समझने की आवश्यकता है. टाइम चालू किया ना, समय शुरू हो गया, हाँ हो गया. देखिए, अद्वैत तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक तुलना है. हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग ourselves with someone, something. तब तक you cannot attain the or understand the meaning of Advait. अद्वैत तभी समझ में आएगा जब तुलना खत्म हो जाएगी.
आम आदमी हम अक्सर देखते हैं तुलना, मनुष्य का मन इतना चंचल है, जैसे कोई होटल में जाता है और होटल में जाने के बाद ऑर्डर करता है वेटर के पास 1 प्लेट इडली, तो वेटर चला जाता है इडली लाने में, दूसरा कस्टमर बाजू में बैठा है, उसके बाद दूसरा वेटर आता है, वो पूछे आपको क्या चाहिए, वो कहता है इडली वड़ा। जैसे ये दूसरा कस्टमर इडली वड़ा कहता है, पहले वाले को दुख होता है। पहले वाला सोचता है यार मैं भी इडली वड़ा बोलता तो दूसरी चीज भी मालूम हो जाती थी, वड़ा कैसे लगता है 1 ही पैसे में। ये मनुष्य का स्वभाव है। और फिर बाद में ये इसकी इडली आ जाती है, फिर एक इडली बहुत प्यार से खाता है, दूसरी इडली की तरफ थोड़ा इंडिफरेंट लुक देता है ये, क्योंकि मन में वड़ा है। और जब उसके बाद टेबल पे इडली वड़ा आ जाता है, 2 मिनट के बाद वो कस्टमर बालों में अटका हुआ वड़ा उठाकर जोर से झगड़ा करना शुरू करता है वेटर के साथ में, ये क्या है करके। झट से ये आदमी बदलता है, फिर प्यार से अपने दूसरी इडली की तरफ देखता है, अच्छा हुआ मैंने वड़ा नहीं मंगाया। देखो आम आदमी के जीवन में ये तुलना चलती रहती है, और ये तुलना जब तक चल रही है तब तक अद्वैत का अर्थ समझ में नहीं आएगा। तुलना जब खत्म होगी तभी अद्वैत का अर्थ समझ में आएगा। और वो भी तुलना कैसी होनी चाहिए, वो अधोमुखी तुलना होनी चाहिए। ऊर्ध्वमुखी तुलना करोगे तो बात नहीं बनेगी। अगर आप ऊपर देख के बात करोगे कि यार ये आदमी के पास ये है, उस आदमी के पास वो है, मेरे पास नहीं है, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। एक तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अपने नेक में प्रॉब्लम हो जाएगा। डॉक्टर कहेंगे आपको वर्टिगो हो गया है। वर्टिगो क्यों हो गया? आप ऊपर देख के बात चल रहे हो, नीचे झुक के चलना है। नीचे देखो, नीचे क्या कौन है, उसके पास वो चीजें हैं क्या जो मेरे पास है। उसके पास नहीं है इसलिए मुझे खुशी नहीं है, लेकिन उसके पास नहीं है लेकिन मेरे पास है, इसकी खुशी तो होनी चाहिए। और ये ऊर्ध्वमुखी तुलना जब करोगे तभी आप अद्वैत की तरफ यात्रा शुरू करते हो, तब तक आप यात्रा नहीं शुरू करते। मुझे समझना है दूसरे आदमी को, समझा कर बात करनी है किसी से, समझाकर शब्द में भी 2 शब्द है। कहाँ जाना है आपको? समझा कर बोलना है। सुनने वाले की क्वालिटी क्या है, उसका आईक्यू क्या है, उसको समझने के लिए उसके स्तर पे जाके समझ जाके मैं बात करूं तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और इसलिए वर्ल्ड पीस की तरफ जाते वक्त व्यक्ति, कुटुंब, समाज, राष्ट्र और विश्व, इस क्रम में अगर जाएंगे तो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति के मन में अद्वैत भाव तैयार होने के लिए इसकी आवश्यकता है कि हम तुलना ना करें। आई नीड बेटर और आई एम बेटर, ये 2 सेंटेंस गड़बड़ करते हैं। मुझे और अच्छा चाहिए, इसमें भी गड़बड़ है, और मुझे उसके पास से मेरे पास जो है वो और अच्छा होना चाहिए, ये भी गड़बड़ करता है। मेरी विनती है कि अब हम ऐसे गहन विषय पर जब चर्चा करते हैं तो संत ज्ञानेश्वर जी ने जो कहा है, संत ज्ञानेश्वर जी ने जिस तरह से भगवत गीता का अर्थ कहते हुए आम आदमी के समझ में आए ऐसे शब्दों का विनियोग करके भगवत गीता पे निरूपण किया है। वो कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। कठिन शब्द जब आते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। आम आदमी को समझना चाहिए अद्वैत का अर्थ क्या है, नहीं तो फिर रूट तक नहीं जाएगा, यू कैन नॉट पेनिट्रेट। समाज में नीचे स्तर तक ये अद्वैत का अर्थ होना चाहिए, तो उनको समझने के लिए आसान तरीका चाहिए। संत ज्ञानेश्वर जी ने वो काम किया है। वो आसान करने के प्रयास में ही 700 श्लोक है, उसका निरूपण करते वक्त 9,000 जो वर्सेस हुए हैं, हम ओवी कहते हैं उसे, वो क्यों हुए? वो आम आदमी को समझने के लिए। वो क्यों होता है? जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहता है तो एक ही टीचर है, एक ही स्टूडेंट है, तो अगर एक ही टीचर और एक ही स्टूडेंट है तो उंगली क्या ऐसे कहता है आदमी, उंगली उठा के, एक ही बच्चों को सिखाना है तो। लेकिन जब बच्चों की संख्या बढ़ती है तो सिखाने वाला कहता है मेरे बच्चों, दोस्तों सुनो मेरी बात। तो ये जो शरीर का विस्तार है, उंगली से लेकर दोनों हाथ फैलाना, क्यों? सुनने वाले की संख्या बढ़ गई। ये शरीर का विस्तार भी प्रतिभा में होता है, और प्रतिभा में जो विस्तार हो गया तो केवल 700 श्लोकों पे निरूपण करते वक्त 9,034 तक वर्सेस तैयार हुए ज्ञानेश्वरी में। और इसलिए 700 सालों के बाद भी आज वो ज्ञानेश्वरी उतनी ही फ्रेश लगती है कि आज भी हमारे पूरा वारकरी संप्रदाय सर पे लेके नृत्य करता है, कीर्तन करता है। अद्वैत का अर्थ समझने की ये बात है। घर में भी ये अद्वैत का अर्थ हम समझ सकते हैं। मैं जब घर में जाता हूँ, जब मेरी बच्ची अगर कहती है कि बाबा ऐसे कहती है, तो
उसका बाबा कहना ये अद्वैत की अनुभूति नहीं है। अपने पत्नी ने अच्छा खाना बनाया तो खाना खाते वक्त क्या बात है, ऐसे बोलना अद्वैत की अनुभूति नहीं है। ये प्रोसेस समझने के लिए जरूरी नहीं कि हम अनुभव भी ऊपरी स्तर पर करें, नीचे से अनुभव शुरू करना, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेशन होनी चाहिए अद्वैत समझने के लिए, तभी बात बनेगी। इसलिए चार मुक्ति की जो बात की है संत ज्ञानेश्वर जी ने आपने हरिपाठ के पहले अभंग में, देवाचे द्वारी उभा क्षण भरी तेने मुक्ति चारी साधी है लिया। ये स्वरूपता, सलोकता, समीपता और सायुज्यता, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेशन है ये। पहले स्वरूपता, पहले देख लिया दर्शन क्या है, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, पहले देख लिया स्वरूपता, फिर अवलोकन किया सलोकता, फिर नजदीक गया समीपता, और फिर अद्वैत हो गया, सायुज्य बन गया। डायरेक्ट सायुज्य नहीं हो सकते, आपको ये प्रोसेस से जाना होगा। और वो जाने के लिए अपने निजी जिंदगी में हम कैसे अनुभव करते हैं, चंचल मनोवृत्ति को संचल मनोवृत्ति कर सकते हैं क्या? गुरु परमात्मा परेशु ऐसा जाता दृढ़ विश्वासु, वो संचला होना चाहिए। वो संचला कैसे हो सकते हैं? फिर तरीका है संचला होने का, वो तरीका है मनन करो। मनन का अर्थ ऐसा है कि मुझे मेरा मन नहीं है ऐसी स्थिति तैयार करना। मुझे मेरा मन नहीं है मतलब मुझे मेरा मत नहीं है। तो ये भगवान है या ये गुरु है, इसके चरणों में बैठने के बाद मुझे मेरा मन नहीं है तो मन न, मैंने मेरा मन बंद कर दिया, अब ये कहेगा वैसे ही बर्ताव करूंगा मैं, मन न किया। लेकिन डिफिकल्ट है, ये इतना मुमकिन नहीं होता। फिर दूसरी बात आती है। दूसरी बात क्या है? अगर इस तरह से आप अकेले मन न नहीं कर सकते हो तो ज्ञानी आदमी दिखाई दिया तो न मन करो। मन न नहीं हो रहा है ना, तो न मन करो, रिजल्ट वही है, परिणाम वही है। मुझे मेरा मन नहीं, वो भी नहीं हुआ तो अर्जुन का तरीका ढूंढ लो, अपने नजदीकी आदमी के पास जाके वह मन कर दो, जो मन में है वो बोल दो, खाली हो जाओ। जितने खाली हो जाओगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये षड रिपु ये बांसुरी की तरह है, ये 6 छिद्र रहते हैं बांसुरी को। मतलब क्या? अपने देह के भी बांसुरी बनाओ, 6 छिद्र है उसमें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उसको निकाल दो और फिर जब चाहे उतनी उंगलियां उस पर दबा के फूंक मारो, फिर बांसुरी सुर में बजेगी, तब तक नहीं बजेगी। और ये समझाने की आवश्यकता है आम आदमी को। तकलीफ ये हो रही है कि अध्यात्म को और कठिन करते जा रहे हैं। अध्यात्म को सिंपल करना है, आसान करना है, तभी समाज बदलेगा, तब तक समाज नहीं बदलेगा। और इसलिए मेरी विनती है आपसे, समय है, समय ही सबका उत्तर है और उसका ही दिल पत्थर है। 5 मिनट बचे हैं, लेकिन मेरा कहना, मैं अक्सर वो कोशिश करता हूँ कि क्या ये बड़े बड़े अध्यात्म के शब्द जो हैं वो क्या आसान कर सकते हैं लोगों के लिए, लोगों के सामने रखने के लिए। जैसे मैंने अभी इडली वड़ा का दृष्टांत दिया तो आम आदमी को समझ में आएगा, अरे हाँ वो पूड़ी में बांधे हुए सिंग खाते हैं, वो जब मूंगफली खाते हैं पूड़ी में बांधी हुई, तो एक भी अगर उसका दाना दांत पे लग के नीचे गिर गया तो हाथ में पूरी पूरी होने के बाद भी आदमी कहता है यार एक दाना गया मेरा, है ना, तकलीफ लगती है उसको। ये मनुष्य का स्वभाव है, ये जानना जरूरी है। जब तक हमारा अध्यात्म 2 चीजें नहीं करता तब तक अद्वैत समझ में नहीं आएगा। संत ज्ञानेश्वर जी ने वो आसान किया और इसलिए वो आदर्श है। बार बार विश्वनाथ कराड सर बार बार ज्ञानेश्वरी, ये जो गुंबद तैयार किया उसका संत ज्ञानेश्वर विश्व शांति गुंबद क्यों, सभागृह क्यों, ज्ञानेश्वर जी क्यों, उसकी वजह यह है वो उन्होंने आम आदमी के लिए उसको आसान किया। जो बड़ा चम्मच रहता है, जो दाल में जाता है, वहीं से लेकर वो करी में भी जाता है, वहीं से लेकर वो तरकारी में भी जाता है, लेकिन अपने आप को वो तरकारी या कड़ी लगा के नहीं लेता, उसके चम्मच को वो चिपकती नहीं है। तो ये दृष्टांत माउली ने दिया है। जो ऑडियंस में बैठी हुई जो गृहिणी है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उस औरत को जो कुक है घर में, उसको भी समझ में आना चाहिए कि स्थित प्रज्ञा का मतलब क्या है। और ये स्थित प्रज्ञा का इस तरह से वक्ता अगर दृष्टांत आसान कर ले तो लोगों के मन में समझ में जाएगा कि अद्वैत मतलब क्या है। तो ही विश्व शांति, व्यक्ति शांति जब तक नहीं होती तब तक व्यक्ति शांति के बाद कुटुंब शांति होगी, कुटुंब शांति के बाद राष्ट्र शांति होगी, राष्ट्र शांति के बाद विश्व शांति होगी। पहले व्यक्ति शांत होनी चाहिए। और
डिफिकल्ट नहीं है भाइयों, बिल्कुल नहीं। हमारा अध्यात्म व्यक्ति सापेक्ष रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, वो विचार सापेक्ष होना चाहिए। व्यक्ति सापेक्ष है इसलिए प्रॉब्लम है। मैं कितना कठिन शब्दों में अध्यात्म एक्सप्लेन करता हूँ उतना मैं बड़ा आध्यात्मी हूँ, ये दिखाने का व्यक्ति सापेक्ष मकसद जिसके मन में है उससे अध्यात्म नहीं हो सकता। वो अध्यात्म का मतलब ही नहीं समझे अगर वो हो रहा है तो। इसलिए आसान करना है तो आसान उदाहरण देता हूँ, रुक जाता हूँ, 3 मिनट बचे हैं। पेड़ का बीज है, वो कैसे पाएंगे आप? अहंकार छोड़ना है। तो पेड़ का बीज है तो बीज जब तक बाजू में ऐसे रखा है, टीपॉय पे रखा है, तब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बीज जब अपना अहंकार छोड़ देता है और मिट्टी में खुद को मिला लेता है तो मिट्टी भी खुश हो जाती है कि यार ये कॉन्सेंट्रेटेड सीड था, इसने अहंकार छोड़ दिया तो वो फूटता है अंदर, वहां से पेड़ निकलता है बाहर, वहां से पौधा निकलता है, वो बड़ा होते जाता है। मिट्टी इतनी खुश जाती है धरती माँ उसके ऊपर कि इसने अहंकार छोड़ दिया, बीज ने अहंकार छोड़ दिया। और फिर वो बड़ा होता है पेड़, उसके शाखाएं आती हैं, उसको फूल आते हैं, उसमें फल आते हैं। फिर भी नीचे से जमीन मदद करती है उसको, क्यों? अहंकार छोड़ा इसलिए मदद करती है। फिर फल बड़ा हो जाता है और फल पकने के बाद नीचे गिरता है। दोस्तों वहां पे न्यूटन बैठा है। न्यूटन कहाँ बैठा है? जब फल पेड़ से गिरा तब। और न्यूटन कहता है ये रूल ऑफ ग्रेविटी है, ये गुरुत्वाकर्षण है। और भारतीय अध्यात्म न्यूटन से पूछ रहा है कि ये ऊपर कैसे गया? जो फल आप बोल रहे हो नीचे आया वो ऊपर कैसे गया? ऊपर तभी गया जब अद्वैत हुआ मिट्टी के साथ में। क्या हम मिट्टी के साथ अद्वैत हो सकते हैं? मिट्टी के साथ अद्वैत होना तभी बात बनेगी, तब तक बात नहीं बनेगी। खैर यहाँ रुकता हूँ, माइनस में चला गया 1 मिनट ज़्यादा बात की मैंने, लेकिन इतना सिंपल है ऐसे मुझे लगता है। और मुझे जो लगता है वो मैंने आपके पास अभी आपके पास समय है, समय है आपके पास है। -1 हो गया इधर। नहीं, प्लस होने के बाद आप रुकेगा। अच्छा, प्लस होने के बाद में रुकना है। हाँ करे मेरा गणित अच्छा नहीं है। तो ये जैसे गुरु ने कहा अपने शिष्य से कि तुम ध्यान लगाओ, तो बोलते नहीं मैं ध्यान लगाता हूँ भगवान का, लेकिन मेरे नजरों के सामने मेरी भैंस आती है, प्यारी भैंस है मेरी, वो मेरे सामने आती। तो गुरु ने कहा साधन क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, भैंस का ध्यान लगाओ, ध्यान लगना इंपॉर्टेंट है। तो उस शिष्य को तो सीखने के लिए नहीं जाना था गुरुकुल में, वो बैठा रहा। समय हो गया, 10 बजे का स्कूल है और शिष्य आया नहीं, तो गुरु देखने गया। तो अरे आ जाओ, स्कूल शुरू हो गया। गुरु ने कहा, तो शिष्य कहता है मैं ध्यान में बैठा हूँ भैंस के। तो बोलते ध्यान से बाहर आ जाओ। बोले आने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दरवाजे में सींग अटक रहे हैं दरवाजे के बाहर नहीं आ सकता। कुछ भी कारण निकाल के नहीं जाना है पढ़ने के लिए। सवाल ये है कि मुझे ऐसे लगता है, अभी ये आपको लगा तो उपक्रम है मराठी में, नहीं तो उपद्व्याप है, लेकिन अध्यात्म इस तरह से हमें सिखाना चाहिए लोगों को। और दूसरा अध्यात्म की जिम्मेदारी है अध्यात्म की प्यूरिफिकेशन ऑफ पॉलिटिशियंस। तो ये 2 चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं, आम आदमी के पास नहीं पहुंच रहे हैं और प्यूरिफिकेशन ऑफ पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे हैं, जो पुराने ज़माने में हमारे ऋषि किया करते थे। तो जब होगा ना तब ये अद्वैत, वर्ल्ड पीस, ये सब अपने आप वैक्यूम की तरफ कैसे हवा आती है वैसे अंदर आ जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर संजय उपाध्याय जी का। ब्यूटीफुली सेड। थैंक यू सो मच। पीस के लिए एक और शब्द है, मतलब कहूँ शांति के लिए एक और शब्द है, वो है अमन। तो अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन में कहें तो अमन इज इक्वल टू शांति। तो अगर अमन इज इक्वल टू शांति तो मन इज इक्वल टू ही अशांति है। तो जब हम कहते हैं अभी मन शांत हो गया तो मन शांत होता ही नहीं है। और इसलिए उपाध्याय साहब ने कहा कि मन जब न हो जाता, नमन, मन जब जीरो हो जाता, जैसा हमको आदरणीय आचार्य जी ने बताया, योगी जी ने, कि मन जीरो मेडिटेशन जब होता है, शायद हमको कभी मौका मिलेगा यहाँ पर इस सभागृह में कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हम आपका जीरो मेडिटेशन भी कर पाए। तो जब न मन हो जाता है, वही संजय उपाध्याय सर ने कहा। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। Before I invite our next speaker, he is a very renowned neurosurgeon. He is author of Speaking Tree column in the Times of India. I am referring to Dr. Deepak Ranade ji. He is professor and head of the Department of Neurosurgery at DY Medical College, Pimpri. And
he has performed around 300 major neurosurgeries very independently, and he is also a very good scientist in consciousness and neuroscience. So please put your hands together and welcome with big round of applause Dr. Deepak Ranade ji. Very good afternoon. Respected Professor Karad, Vedantiji ji, Sanjay Upadhye ji and my esteemed guests. मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा क्योंकि शायद ये मिक्स्ड ऑडियंस है एंड अगर मेरी हाथ से कुछ मेरी लैंग्वेज में गलती हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ पहले से ही। हमारे एक पहले जो बुजुर्ग स्पीकर थे उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन दिया था रिलीजन का। उन्होंने उनका नाम सैयद काल्बे रिजवी जी था। उन्होंने कहा कि धर्म मतलब एक खोज है, हर एक की खोज है, खोज उस परवरदिगार की या फिर कुछ भगवान की या फिर। तो मेरे लिए भी ये अद्वैत का जो प्रवास था वो एक खोज की तरह से शुरू हुआ। ये खोज किस बात की थी? जब मैंने डॉक्टरी का पढ़ाई शुरू किया तो ब्रेन का जब हमने पढ़ाई शुरू किया तो उसमें कॉन्शियसनेस जो हम बोलते हैं, जिस चीज़ के हम जिसे हम हिंदी में बोले तो हम अवेयरनेस बोले या फिर सतर्कता बोलते हैं, तो कॉन्शियसनेस जो एक ह्यूमन बीइंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो वो कॉन्शियसनेस कहाँ रहता है दिमाग के अंदर, वो किस चीज़ में होता है, इसकी मुझे खोज करनी बहुत इंपॉर्टेंट लगी थी। तो इसलिए मैंने आगे जाके न्यूरोसर्जरी का अध्ययन शुरू किया और अब हर बार जब मैं ऑपरेशन करता हूँ और स्कल खोल के दिमाग को देखता हूँ तो एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एक 1.5-2 किलो का जो एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन के जरिए हम पूरे ब्रह्मांड का हम एहसास लेते हैं। तो ये हम कॉन्शियस होते हैं पूरे यूनिवर्स का। तो ये कॉन्शियसनेस आया कहाँ से? तो ये खोज अभी भी मेरी जारी है। मैं अभी भी पीएचडी कर रहा हूँ। एफएमआरआई करके एक टेक्नोलॉजी आई है जिस वजह से कि दिमाग में कॉन्शियसनेस कौन से हिस्से में जागरूक होता है, इसकी पढ़ाई मेरी अभी पीएचडी चालू है इस विषय में। तो मेरी खोज अभी भी जारी है। उससे भी आगे खोज थी कि ये ब्रह्मांड है, ये क्या है, ये किसने बनाया है। जब मैं देखता हूँ कि एक 3-4 साल का बच्चा, उसको ब्रेन का ट्यूमर हो गया है और उसको कोई हम कर्मकांड बोलते हैं कि पिछले जन्म का कर्म है या कुछ, हमारे शास्त्र कुछ बताता नहीं है कि किस लिए इस बच्चे को ये ट्यूमर हो गया है। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये क्यों हुई, किसने किया, ये जो सवाल थे, इन सवालों की खोज मुझे बहुत बेचैन करती थी। कई बार ऐसे होता था कि रात भर नींद नहीं आती थी, कि ये समझता ही नहीं था कि ये क्या चल रहा है। ये बहुत देखा जाए तो जैसे आइंस्टाइन ने ये कहा था कि द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग ऑफ द यूनिवर्स इज दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। कुछ चीजों का हमें पता चलता है लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिनका हमें पता चलता नहीं है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी है और इनकॉम्प्रिहेंसिबल भी है। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, क्या किया है? तो ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा बिग बैंग थ्योरी। ये ऐसे बोला जाता है हमारे साइंस में कि बिग बैंग की वजह से ये पूरी ब्रह्मांड का की उत्पत्ति हुई है। तो बिग बैंग का बारे में सोचते सोचते पढ़ते पढ़ते मुझे क्वांटम फिजिक्स की ओर खींचा चला गया। मैं क्वांटम फिजिक्स का भी बहुत अध्ययन किया मैंने। ये E=mc² जो है, ये जो मैं समझता हूँ आइंस्टाइन जैसे जो शास्त्रज्ञ थे वो एक तरह के ऋषि मुनि ही थे। उनको उनकी एक वो जो एक परा विद्या या परा ज्ञान जो प्राप्त हुआ उनकी तपस्या करते करते, तभी उनको ये इक्वेशन का उनको शोध डिस्कवरी हो गई। तो क्वांटम फिजिक्स का बहुत अध्ययन किया मैं, और क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन करते करते आप सब लोगों को मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ जो इवेंचुअली मुझे अद्वैत की तरफ लेके गई। क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि ऑब्जर्वर जो है वो अगर नहीं है तो ब्रह्मांड नहीं है। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल ट्रूथ्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स।
फॉर एनी इवेंट टू अकर, किसी भी चीज को अगर अस्तित्व में लाना है तो उसके लिए एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर कोई देखने वाला नहीं है, जो अगर कॉन्शियसली ऑब्जर्व करने वाला अगर कोई नहीं है, तो उसका एक फेमस एग्जांपल दे देते कि अगर जंगल में कोई पेड़ गिरा और किसी ने उसे गिरते देखा नहीं, तो कुछ आवाज नहीं हुआ, तो वो गिरा नहीं है पेड़, क्योंकि किसी ने उसको देखा नहीं है। तो अभी साइंस की जो परिभाषा पहले जो थी कि रियलिटी है, जैसे न्यूटोनियन फिजिक्स में जो था कि हार्ड रियलिटी थी, मतलब टाइम स्पेस, वो देखना, कोई देखने वाला हो या ना हो, वो वैसे उसका अस्तित्व रहता ही था। लेकिन पोस्ट क्वांटम फिजिक्स जब उसकी डेवलपमेंट हो गई, तो ये बात सामने आई कि अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो हुआ नहीं है कुछ। तो फिर ये बात हो गई कि रियलिटी करके कोई वाकई में चीज है क्या। वापस मैं आपको मेरे ब्रेन की तरफ लेके जाता हूं। जब हम कोई चीज देखते हैं अपनी आंखों से या आवाज सुनते हैं, तो ये अपने दिमाग में पहुंचता कैसे है। तो जैसे कि अभी मैं आपको सब लोगों को देख रहा हूं, आपके यहाँ से जो लाइट है वो मेरी आंखों में जा रही है, वहां से ऑप्टिक नर्व्स में जाके, वहां से ऑप्टिक ट्रैक्ट से जाके मेरे ऑक्सीपिटल लोब्स में पहुंच जाती है। तो ये एक तरह का डिजिटल सिग्नल है। ये डिजिटल सिग्नल मेरे दिमाग को ये बता रहा है कि आप लोग सामने बैठे हैं मेरे, पर ये डिजिटल सिग्नल ही है। तो क्या मैं मेरी आंखों की जो इंफॉर्मेशन मुझे दे रही है उस पर मैं पूरा यकीन कर सकता हूं? कैन आई बिलीव इन दैट? क्योंकि बाद में ऐसे पता चलता है कि ब्रेन भी वो जो इमेज जाती है मेरे ब्रेन तक, वो मैनिपुलेट करता है। ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो ब्लाइंड स्पॉट हम सब लोगों में ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो ब्लाइंड स्पॉट ढक देता है ब्रेन। तो जो इनपुट जा रहा है वो ब्रेन उसको किसी तरह से प्रोसेस करके मुझे दिखा रहा है कि ये है। तो मेरी सेंस ऑर्गन जो है, जो मेरी पंचेंद्रिय है, उनमें वाकई में विश्वास रखूं या नहीं रखूं, उनकी क्या तो मेरी रियलिटी के जो समझदारी है वो इसी पे डिपेंडेंट करती है कि मेरे सेंस पंचेंद्रियों से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है उन पे ऊपर मैं पूरा यकीन रखूं और ये रियलिटी है ये समझूं। लेकिन मेरी पंचेंद्रियों को बहुत लिमिटेशंस भी है। तो रियलिटी क्या है और ऑब्जर्वर क्या है और कॉन्शियसनेस क्या है, तो इसकी खोज करते करते मैं बहुत गहराई तक पहुंचा। और 3 साल पहले मैं जिनीवा में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, जहां पर क्वांटम फिजिक्स के बहुत हिग्स बोसॉन का जो जहां पे शोध लगाया, वहां पर मैं पहुंचा। क्योंकि मुझे इसकी पूरी मेरी खोज थी, मैंने जैसे शुरुआत में बताया आपको कि मेरी खोज थी कि मुझे ढूंढना है ये क्या है। तो अगर हो सके तो एक मिनट की फिल्म है जो वो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के मैं गया था, उसकी एक फिल्म आपको सब लोगों को दिखाना चाहता हूं। क्योंकि मेरा ये खुशनसीबी थी कि मैं वो अंडरग्राउंड टनल जो 26 किलोमीटर लंबी टनल है उसके अंदर में जा सका, क्योंकि आमतौर पे उसके अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता। कैन वी सी द फिल्म? टेक्निकल टीम प्लीज प्ले द फिल्म ऑलरेडी। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये फिल्म है, यहाँ पर ये टनल के अंदर हम घूम रहे हैं और ये टनल के दाहिने बाजू में जो छोटे पाइप दिख रहे हैं, वो पाइप्स में एक्चुअली प्रोटॉन्स होते हैं जो एटम से भी छोटे होते हैं। उनको लाइट की गति तक उनको एक्सेलरेट करके उनको बैंक किया जाता है और उनके छोटे छोटे जो टुकड़े बनते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, ये समझने को कि बिग बैंग के टाइम में क्या हुआ था। तो ये मेरी खोज, थैंक यू सो मच, तो ये मेरी खोज जारी थी। और उसी दौरान में मुझे अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि ये ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है इस देर। और जब हम खोज की बात कर रहे थे, तलाश की बात कर रहे थे, तो हर एक कोई अपनी मजहब की तरह से कोई नाम बदल जाता है, लेकिन वो जो बात हमको अब हमारे दिमाग को समझ में नहीं आती है कि ये कहाँ कैसे है, तो वी असाइन इट गॉडहुड। The lapses in our understanding of whatever our intelligence tells us is manifest as God. तो इस बाद में मैंने थोड़ी मेरा पढ़ने का जो कोशिश जो थी वो धीरे धीरे I happened to come across one book जिसका संजय उपाध्याय जी ने जिक्र किया था, ज्ञानेश्वर माउली। उन्होंने ही एक किताब, उनका एक ग्रंथ है चांगदेव 65 करके, तो वो मेरे हाथों में पड़ा।
वो मेरे हाथों में पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि उनका देखने का जो नजरिया है, सब लोग ये समझते हैं कि ज्ञानेश्वर यार ये जो रिलीजन है ये, तो मैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात दोहराना चाहता हूँ कि मैंने जो अभ्यास किया है संत ज्ञानेश्वर माउली का, तो मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूँ कि वो एक शास्त्रज्ञ थे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आइंस्टाइन एक ऋषि थे, वैसे संत ज्ञानेश्वर एक शास्त्रज्ञ थे। और मैं ये कहने की वजह भी बोलता हूँ, अभी मैं सब एक समीकरण लाके आपके सामने खड़ा करता हूँ। वो शास्त्रज्ञ क्यों थे? तो चांगदेव पासष्टी की जो एक शुरुआत की जो उनने 65 एक ऐसे 4-4 लाइनों के ओवी बोलते हैं वैसे रहती है। तो उसकी पहली जो ओवी है उसमें लिखा है स्वस्ति श्री वटेशु। वो वटेशु मतलब चांगदेव जो ऋषि था उनके लिए उन्होंने कहा है स्वस्ति श्री वटेशु जो लोपोनी जगत भासु दावी मगा ग्रासु प्रकटला करी। तो संत ज्ञानेश्वर का ये कहना है कि ये जो सब ब्रह्मांड जो दिखता है वो अगर मेरे देखने का नजरिया अगर मैंने बदला तो मुझे सब जगह ब्रह्म दिखता है। और तो जो लोपोनी जगत भासु, अगर मैं वो नजरिया नहीं रखता हूं तो मेरे ये सब ब्रह्मांड दिखता है। और अगर मेरी नजरिया बदल दिया और मुझे ये साक्षात्कार हुआ तो मुझे ये सब ब्रह्म दिखता है। तो फिर ये बात जब मुझे पता चली तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर मिला मुझे, देयर इज नो क्रिएटर। क्या आप मुझ पे यकीन कर सकते हो कि जब मैं ये कहता हूं कि देयर इज नो क्रिएटर, क्रिएटर है ही नहीं कोई, तो फिर क्या है? तो ये जो हम सब ब्रह्मांड जो देखते हैं दैट इज नॉट अ क्रिएशन, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन। वो ये ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ये उसने किसी ने बैठ के ये बनाया नहीं है। आप अगर सोचेंगे कि ये 14,000 बिलियन ईयर्स लाइट ईयर्स की जो डायमेंशन है यूनिवर्स का, इट इज इम्पॉसिबल को किसी को ये बना सके। ये इम्पॉसिबल है कि कोई बैठ के मैं अभी ये प्लैनेट बनाता हूं, मैं आदमी बनाता हूं, मैं जानवर बनाता हूं, ये तो नामुमकिन है। तो ये जो सब है ये एक वही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। और ये बात, और संत तुकाराम जो एक हमारे संत वांग्मय में एक बहुत ही जगत गुरु जिन्हें कहा जाता था, उनका एक अभंग है, बहुत ही डीप मीनिंग वाला अभंग है, अनुरणीय थोकड़ा उसका नाम है वो। और उसमें एक जो वर्स है उसके अंदर के सांडिली त्रिपुटी। अभी सांडिली त्रिपुटी ये जो शब्द है ये अनपढ़ होते संत तुकाराम माउली, उन्होंने कुछ ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन उनका सांडिली त्रिपुटी ये एग्जैक्टली क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हो। क्योंकि सांडिली त्रिपुटी मतलब ट्रिनिटी। ये ट्रिनिटी क्या, सांडिली मतलब ये जब ट्रिनिटी का नाश हो जाता है वो क्या ट्रिनिटी है? तो उसमें दृष्टा, दृश्य और दृष्टा। मैं देखने वाला हूं, मैं दिखता हूं वो दृश्य है, और हमको जोड़ने वाला देखने दर्शन का जो है, सो दृष्टा, दर्शन और जो ऑब्जेक्ट है, ये इन तीनों को त्रिपुटी बोलते हैं। तो जब ये त्रिपुटी खत्म हो जाती है तब सांडिली त्रिपुटी दीप उजला घटी। दीप उजला घटी मतलब मुझे वो ज्ञान हो गया जिसके बारे में ये बोल रहे थे कि साक्षात्कार बोलते हैं हम इसको। तो ये जब दृश्य, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्वेशन, ये ट्रिनिटी, ये जो ट्रिनिटी है उसका जब लोप हो जाता है तभी मुझे पूरा ज्ञान हो जाता है। तो ये जो दिस अगेन कम्स बैक टू क्वांटम फिजिक्स विच सेज कि अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो कुछ नहीं हुआ ही नहीं है। तो हम अभी तक जो बातें करते रहे हैं कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी शुड यूनाइट, ये मैं मेरी खुद की जिम्मेदारी समझता हूं कि माउली और तुकाराम माउली ये जो जिन लोगों को दिव्य दृष्टि मिली और जिनको ये परा दृष्टि मिलने के बाद उनको एक अनुभूति हुई, और वो जो हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों चीजें, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये दो अलग चीजें नहीं है। और ये मैं मेरा फर्ज समझता हूं कि माउली या तुकाराम ये जो परमात्मा के अवतार थे, उनको वो जो रंग में लपेटा गया है, भगवे रंग में लपेटा गया है, वो उनकी बदनसीबी है। और उनको वो किसी भी रंग से, उनको पानी के रंग जैसा है, वो पानी जो है जिसको कोई रंग नहीं होता है, वो अल्टीमेट सत्य है। तो वो सत्य सबके सामने लेके आना, यही
मेरी एक जिंदगी की ख्वाहिश बनी है, क्योंकि ये किसी भगवान का जिक्र नहीं करते, कुछ कोई नहीं, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि ये सब है वह ब्रह्म का एक अभिव्यक्ति है। और अद्वैत का सबसे जो एक, मैं क्लोज करने के पहले एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहता हूँ कि जैसे मेरे सामने बैठे वक्ता ने एक बात कही थी कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का आपने उल्लेख किया था, तो ये आदि शंकराचार्य का एक स्टेटमेंट हुआ करता था। लेकिन ज्ञानेश्वर माउली ने उस पे आगे जाके कहा ब्रह्म सत्य जगत सत्य, क्योंकि जो ब्रह्मांड जो है, वो जो ब्रह्म जो सत्य है उसकी ही अभिव्यक्ति है, तो सच की अभिव्यक्ति कभी झूठ नहीं हो सकती। तो ये ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। और ये जो चीज है ये हमको आखिर में हम विल कम टू दैट, ये एक निकष पे पहुंच जाएंगे हम, कि खोज तभी खत्म हो जाती है जब खोजने वाले को ये समझता है कि जिसकी खोज कर रहा हूं वो मैं ही हूं। और ये जो उपनिषदिक ट्रुथ है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये उसी का एहसास है कि मैं और जो परवरदिगार है उसमें कोई अंतर नहीं है, तो झगड़े किस बात का, हम सब वो सब एक ही की अभिव्यक्ति है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you so much. Please give a huge round of applause to Dr. Deepak Ranade ji. Wonderful explanation for non-duality. Thank you so much. And before I invite our next speaker, he is a ENT surgeon, Dr. Govind Palkar ji. He has passed from the BJ Medical College and he also worked in Sasan Hospital, Pune. He is having his private medical practice since 1981. So means he is 4 decades he is serving in the medical profession, and he turned towards study of spiritual sciences with the blessings of his Param Pujya Yogi Swami Gagan Giriji Maharaj, a very renowned personality in the field of spirituality, and he has written over 23 books on science and spirituality. So please help welcome Dr. Govind Palkar ji. सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमात्मया. I offer my obeisance to the dignitaries on the dais and heartfelt greetings to all of you. If we want to achieve the peace in the world and bliss in the life, it is necessary to realize the concept of the Advaita is the consciousness, non-dimensional existence, and this should be the first and foremost part of the education. Swami Vivekananda said, and this statement is strongly realized by Dr. Vishwanath Karad and Dr. Edison Samraj, who is the former Vice Chancellor of the university. Swami Vivekananda stated that in 21st century, India will come forward not by inertia, but by the consciousness. India will become Jagat Guru and will guide the whole mankind. And the process has begun. Dr. Vishwanath Karad sir has received a divine boon. We are experiencing through these spiritual conferences. What is the relation between the consciousness and the matter? Because when we study the consciousness, matter has to be studied. The great physician and a scientist, Max Planck, has stated that science ends in God. That is realizing the cosmic consciousness, and your beautiful life begins with the God. That means ethics and jurisprudence, which is the most important part of the human life, can not be formed without the accepting foundation and base of the God. Ethics and jurisprudence is the basic of our beautiful life. For realization, there are 2 methods of the investigations. One is the analysis, that is from manyness to oneness, and other is synthesis, that is oneness to the anotherness. To realize this consciousness, if we start the study of our human body is formed from the fertilized ovum, that is zygote cell. Zygote cell is formed from several genes. One gene is formed from several codes. One code is formed from amino acids. One amino acid is formed from carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Here where scientific study stops.
our intelligence thinking become ceases. But when I travel by boat, I have to leave the boat when I reach to the shore, and I have to find some another vehicles. Dr. Vijay Bhatkar said when scientific study stops, imagination power starts working. Who gave the mechanical knowledge and technology to zygote cell for designing various organs? We, in this world, the consciousness, we realize the consciousness, there is something which is working behind this zygote cell to give design and structural design to these zygote cells. We, in the world, we enter into the consciousness. Our consciousness first realize that the great cosmic intelligence is working behind this zygote cell. To realize and get the knowledge of this Amruta Tattva, what should be done? Te dhyana yoganu amruta tapasya. In deep state of meditation, we realize that the consciousness. And what is the method? Yoganushtana ashuddhikshaya jnana dipti. Yoga means discipline, anushtana means study. With the discipline study, impurities of the thoughts removed, and that clean state of the mind we enlighten. Elizabeth Blackburn, a Nobel Paritoshik winner and psychologist Elijah Appel, proposed a theory. Positive harmonious thinking causes effect on the telomere of the chromosomal, and it gives the healthy, active and disease-free life. But Indian mythology, not only health, but we get serenity, satisfaction, happiness, then calmness, and that is the liberation. There are the 7 steps of the getting liberation, that is called as Saptada Pranta Bhumi Pradnya. First is the prayer, second is chanting of the God's name with the mantra, that is the incantation. Third is the meditation. Fourth is the spiritual knowledge. Fifth is the devotion, that is bhakti. Sixth is dispassion, that is vairagya. And seventh is the liberation. In prayer, God listens to us, and in meditation, we listen to the God. Chanting of the mantra, that is the incantation. Chanting of the mantra, the name of the God, starting with the Om, is the keynote for initial stage of the salvation. With the remembrance of the name of the God, journey of the soul begins towards the realization of the God. Mantra has a great power for liberation in the Kali Yuga. Saint Tukaram Maharaj said, Naam japale Valmiki ne, tono pyase putli pani, aja mera paparashi, name gela vaikuntashi, aisa namacha mahima. And Saint Jnaneshwar said, Asoni samsari jive vege kari, tene muktichari sadi ele, hari muke mana, punyachi ganana kona kari. Here Jnaneshwara said, tene muktichari, that means with the chanting of the God's name, tene muktichari means we get the 4 types of the liberation. First is the salokta, just like online friendship with the God. Second is the samipta, coming close to the God, we develop the relation with the God. And third is swarupta, that is similarity between God and me, that I obey the orders of the God and working what God likes. And sayugjata becomes one, that is liberation. Philosophy of the mantra, Om. I want to tell the philosophy of the mantra. What was there before word come into the existence? Scientists are not ready to go behind the singular stage. There was potential energy and spiritual energy. The state of this world was the low density magnetic field, that is equipotential state. There was no moment, everywhere was serenity, equality, and this state of potential state has become, it has a low density magnetic field.
The first Newton's law tells us that when unless and until we apply the external force to the body will not move, or if it is in motion, it will not, it will remain in the motion in the straight direction. Our body also, if we don't apply our willpower force, our body will not move, or we can't raise our fingers if we don't apply our willpower force. Similarly, the spiritual energy, with the force of the willpower of the spiritual energy, the consciousness, potential energy becomes the movable. In the motion, it becomes the high density magnetic field. Potential energy starts flowing. That time sound is produced. Its pronunciation is like Om. Scientists had catched this sound as Om. That is the primordial sound, Pranava, original humming sound of the cosmic radiation. It is not belonging to any caste, creed or religion. It is characterized by the primary characteristic of the sound is the Shabda. Primary characteristic of the silent state is the white, that is Akash Tattva, and this is Shabda Tattva. Words are uttered only by the human beings because speech center is developed on mammalian brain, that is neocortex. Basal ganglion brain of the reptiles and the birds have no speech center. Higher animals have allocortex. Primary brain also have no speech center. Words are formed from speech center, that is Broca's area of the left hemisphere of the brain. That is Broca's area. It leads to the knowledge, transformation and realization. So it is called as a Shabda Brahma. Brahma means the great. Every cell of our body is pervaded by this sound. Chanting of the mantras cure cancer cells. Cancer is nothing but the irrelevant behavior of the cells. And this irrelevant behavior of the cells leads to the excessive work, that is mitotic activity. And our pathology reports tell that there are excessive activities of the mitotic cell, so it is cancer. E is equal to mc square. With the chanting of the mantra, we can reverse the cancer cell activities and can get cure. E is equal to mc square. Energy is equal to the square of the speed of the light of the mass. If a satellite is moving slowly, it is visible. If it moves with the square of the speed of the light, we see only this spot of the light. That is, matter is seen as a mass of energy. If we see the atom through powerful microscope, we see nothing but the vibration of the energy. Using our combined power with the group meditation for prayer, divine thoughts are attracted to us very quickly. Dr. Patre is taking group meditation and World Peace Center started this program. If energy generated by the group meditation or prayer is focused on the distance incurable disease and disease the person and he can get cure. Even big problems are solved by collective meditation and chanting of the God's name, that is mantras. I am coming to the end. Prabhu Ramchandra, when battle was finished, asked one question to Marutraya. Marutraya, who are you? Then Marutraya got surprised. I have done some so amazing verse, powerful verse, and that time Prabhu Ramchandra has not asked me any questions. And why is he asking now? Then Marutraya is the enlightened person, so he answered, if you see at my body, I am your servant. That is duality. If you see at me as a jiva, I am part of you. That is also jiva. If you see at my consciousness, I am become you. That is non-duality. Namaskar. थैंक यू सो मच डॉक्टर गोविंद पालकर जी. जोरदार तालियों से स्वागत. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Especially ENT surgeon talking about
such a huge, deeply communication about the spirituality and non-duality. Thank you so much. आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पे आज अयोध्या से बहुत अति विशिष्ट मेहमान यहाँ पर आए हैं. We are really honored by his presence in this 9th World Parliament of Science, Religion and Philosophy. उनका परिचय डॉक्टर राम विलास वेदांती जी, former MP and renowned thinker, Ayodhya, Uttar Pradesh. Ram Vilas Vedantiji ji was born on 7th of October 1958 in Rewa in the state of Madhya Pradesh, India. He is an Indian politician, social worker, educationist, agriculturist, teacher and religious leader who is a member of the Bharatiya Janata Party. He is a member of the Shri Ram Janmabhoomi Trust as well. He is also involved in the construction of the Ram Temple in Ayodhya, and he is a tremendous, huge figure in the religious and spiritual field. So, ladies and gentlemen, please put together a huge round of applause, and I invite Dr. Ram Vilas Vedantiji ji to guide and address us. भारत माता की. सभी लोग दोनों भुजाओं उठाकर बोलेंगे, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, भगवान विश्वनाथ की, भगवान विश्वनाथ की, हर हर महादेव. ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय. यहाँ पर उपस्थित मंचीय सभी महानुभावों, हमारे MIT के विश्व शांति केंद्र के संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, आज गंगा के पावन तट पर भगवान विश्वनाथ की इस पावन नगरी में, जहाँ पर मैं सन 73 से सन 83 तक विद्याध्ययन किया था, आज वह बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी में डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ के इन सभी परिकरों के साथ में अपने को पाकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है. हमारे संजय उपाध्याय जी ने प्रारंभ किया अद्वैत से, और मैं समापन करना चाहता हूँ विशिष्टाद्वैत से. अद्वैत की परिभाषा बहुत अच्छी बताई उन्होंने. अद्वैत माने होता न द्वैतम अद्वैतम, जहाँ किसी प्रकार का द्वैत न हो वहाँ अद्वैत है. तो द्वैत को समाप्त करने का काम तो डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने किया है. हम दो नहीं, हम सब मिलकर एक हैं. और केवल इस देश के लोग नहीं, संपूर्ण विश्व के सभी लोग मिलकर के एक हैं. एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है. ठीक उसी प्रकार जगत के हर व्यक्ति की मानसिकता यदि ये हो जाए कि हम सब मिलकर के एक हैं, तो किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा ही नहीं होगा. और इसी विषय को लेकर सारे विश्व में विवाद फैला हुआ है कि हम एक नहीं, हम अनेक हैं. लेकिन हम अनेकता में एकता को देखते हैं. अनेक होते हुए भी हम एक हैं. हमारा जो सिद्धांत है, हम अनेकता में एकता को देखते हैं और इस एकता में अनेकों को सम्मिलित करते हैं. इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, ये सूक्ष्म चिद अचिद विशिष्ट जगत जो है, स्थूल चिद विशिष्ट जगत सूक्ष्म चिद अचिद विशिष्ट ब्रह्म से आया है. इसलिए ब्रह्म एक है. अभी मैं सुन रहा था, कुछ समझा कुछ नहीं समझा. भागवत का एक प्रसंग मुझे याद है. विज्ञान कुछ भी अणु और परमाणु को लेकर के 26 किलोमीटर की यात्रा किया हमारे डॉक्टर साहब ने. लेकिन मुझे एक आश्चर्य होता है, आज भी आश्चर्य होता है, जब मैं भागवत की कथा कहता हूँ कि एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में बालक को डाल दिया गया और जिंदा बालक निकला.
देवकी के गर्भ से भगवान की योग माया ने निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। गर्भ था देवकी का और बालक पैदा हुआ रोहिणी के गर्भ से। मैंने बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों से पूछा, डॉक्टरों से पूछा, क्या कोई ऐसा डॉक्टर है जो एक मां के गर्भ से बालक को निकालकर दूसरी मां के गर्भ में डाल दे? ये विज्ञान अभी तक बता नहीं पाया। एक मां के गर्भ के बालक को निकालकर दूसरी मां के गर्भ में बालक को डालकर फिर उसके द्वारा वो बालक पैदा हो, ऐसा मैंने सुना नहीं अभी तक। हो सकता है विज्ञान आगे ये भी कर ले। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये भगवान की अघटित घटना पटीसी माया ने ऐसा काम किया था द्वापर में। त्रेता में मैंने ऐसा नहीं देखा, द्वापर में देखा। भगवान कृष्ण की मां देवकी ने देवकी के गर्भ में जो बालक था, उस बालक को भगवान की योग माया ने निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। और इसलिए भगवान छोटे भाई और बलदाऊ बड़े भाई। ये विज्ञान कहां तक कर सकता है इसको मैं समझता नहीं, लेकिन अनेकता में एकता का अनुभव हमने देखा है और समाज के हर वर्ग के लोगों को एक साथ में लाने का काम कुछ लोगों ने किया है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद भारत से जब पहली बार अमेरिका में गए और उन्होंने जो अपना पहला भाषण दिया, उन भाषणों को सुनने के बाद और कई उनकी स्पीच को सुनने के बाद, उनकी पुस्तकों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद संसार के सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं और एकता के सूत्र में बांधकर विश्व को एक करने का काम जैसे स्वामी विवेकानंद ने किया था, इस कलयुग में वही काम डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी कर रहे हैं इसमें। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में देखा MIT में विश्व के सभी धर्मों का जो अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया एक मंदिर के रूप में, जहां पर भगवान शंकराचार्य जी हैं, जहां भगवान रामानुजाचार्य जी हैं, जहां भगवान राम हैं, जहां भगवान कृष्ण हैं, जहां बुद्ध हैं, जहां जैन हैं, जहां मोहम्मद साहब हैं, जहां ईसा मसीह हैं, ये सभी का एक जगह उपस्थित होना ये कल्पनातीत था, किसी ने कल्पना नहीं किया था। और जिस कल्पना के आधार पर राम बाग में वो मंदिर बना, उसका अद्भुत दृश्य देखने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कई लोगों ने उसको देखा। हमारे उडुपी के मध्वाचार्य पूज्य स्वामी विश्वेश तीर्थ जी भी इस वृद्धावस्था में गए वहां तक और उसको देखा। बाद में दिल्ली में मुझको मिले विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में, कहा वेदांती जी कितना अद्भुत बना वो दृश्य, आपने देखा? हमने कहा मैं तो कई बार गया हूं, आप तो पहली बार गए थे। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं, समाज को जोड़ने का काम, समाज को एक करने का काम, जैसे मोदी जी ने 2014 में नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तीन काम उन्होंने 2014 में लाकर किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2014 से पहले डॉक्टर विश्वनाथ कराड ने भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल किया और सभी लोगों ने, केवल मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक माननीय मोहन भागवत जी भी वहां गए और उन्होंने जो विचार दिल्ली के विज्ञान भवन में, हमारे आचार्य धर्मेंद्र जी भी थे और डॉक्टर नितिन गडकरी भी थे, उसमें सभी लोग थे प्राय। उस दृश्य को देखने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं, गंगा के इस पावन तट पर हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए।
जो दृश्य आपने भगवान विश्वनाथ का यहाँ पर देखा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं किया था। मैं तो सन 73 से यहाँ आ रहा हूँ, मैं कभी कल्पना नहीं किया था कि इस प्रकार स्वच्छंद वातावरण में ऐसा मंदिर काशी विश्वनाथ का दिखाई देगा। हम लोग तो गलियों से किसी तरह से निकलते थे और किसी तरह निकलकर गंगा जी जाते थे इस रास्ते से, लेकिन इस अद्भुत दृश्य को जैसे मोदी ने प्रस्तुत किया है, जैसे अद्भुत दृश्य को मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रकट किया है, ऐसा अद्भुत दृश्य हमको पूना के उस राम बाग में दिखाई देता है जहां डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने व्यक्त किया। समाज के हर व्यक्ति को लेकर साथ चलने का काम जैसे जगत गुरु रामानंदाचार्य ने किया था। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने 12 शिष्य बनाया था जो हर जाति के थे, किसी से परहेज नहीं था। हम लोग मंत्र देते हैं वस्त्र से ढककर, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी वृक्षों में चढ़कर, पेड़ों में चढ़कर बोलते थे, सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणो मता, सभी प्रपत्ति के अधिकारी, सभी शरणागत के अधिकारी, जो भी जन्म लिया है वो सब प्रपत्ति के अधिकारी हैं। भगवान राम ने भी त्रेता में इस बात को कहा था, सकृत देव प्रपन्नाय तमास्मित चाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम। जब विभीषण आया और विभीषण को देखने के बाद सुग्रीव ने कहा इसको बांध के रखना चाहिए, राक्षस का भाई ये पता नहीं कहां धोखा दे दे, लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं जी, यदि विभीषण आता है तो आने दो, विभीषण आता है तो आने दो, और रावण भी आए तो रावण को भी आने दो। तो राजा सुग्रीव ने कहा महाराज विभीषण आया तो विभीषण को आपने तत्काल लंका का राजा बना दिया, और यदि रावण आ जाएगा तो क्या करेंगे फिर आप, रावण को कहां का राजा बनाएंगे। तब भगवान राम ने कहा था अरे राजा सुग्रीव चिंता मत करो, विभीषण आया मैंने उसको लंका का राजा बना दिया, लेकिन यदि रावण भी आ जाए तो मैं भैया भरत को अपने हृदय से लगाकर कह दूंगा कि भैया भरत तुम रावण को अयोध्या का राजा बना दो और हम दोनों साथ में रहेंगे। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। अरे सुग्रीव विभीषण आता है तो कोई बात नहीं, आने दो, रावण भी आए तो रावण को भी आने दो। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, और रावण भी अंतिम में स्वीकार किया कि मैं नहीं समझता था कि राम ऐसे होंगे। जब भगवान राम ने रावण को अंतिम क्षणों में मारकर घायल कर दिया और रावण को जब मरने लगा तो मरते समय भगवान राम दौड़कर उठा लिया, तो उठा करके कहा रावण प्रया ही जानामि रणार्दितस्तम प्रविश्य रात्रिम चर राजलंकाम आश्वस निर्याही रथी च धन्वी तदा वलम प्रेक्षस में रथस्थ। जाओ रावण लंका लौट जाओ, खा पीकर जब हिट पुट हो जाना तो युद्ध करने के लिए फिर आ जाना। आश्चर्य हो गया, रावण ने मंदोदरी से जाकर कहा ऐसा मनुष्य नहीं देखा मैंने आज तक, राम मनुष्य नहीं हो सकते। मरते हुए मुझको राम ने कह दिया कि जाओ लंका, खा पीकर हिट पुट होकर तब आना, तब युद्ध करेंगे तुमसे। ऐसी मर्यादा, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार, ऐसा दृश्य विश्व के किसी भी योद्धा ने दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया जैसा भगवान राम ने किया। और इसीलिए लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत होने के बाद भी आज राम सब जगह विद्यमान है, हर व्यक्ति के रोम रोम में श्री राम विराजमान है। और राम के आदर्श को लेकर सारा विश्व आज रिसर्च कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे भगवान राम ने कोल को, किरात को, भील को, बनवासी को, जाति पाति छुआछूत ऊंच नीच की भावना से दूर हटकर, ऊपर हटकर सबको गले लगाने का काम किया त्रेता में, ठीक उसी प्रकार आज इस कलयुग में सबको गले लगने का काम, लगाने का काम यदि किसी ने किया तो डॉक्टर विश्वनाथ करड़ ने किया। सभी को आज भारत रत्न की उपाधि मिल रही है, ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न की उपाधि दी जा रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं तो गंगा के पावन तट पर
भगवान विश्वनाथ के सामने अपनी दोनों भुजाओं उठाकर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोगों की आयु डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ को लगे और जो काम इन्होंने किया है इसी प्रकार सारे विश्व में इस काम को करने वाले लोग पैदा हों और समाज में एक संदेश दें, समाज के लोगों को जागृत करें कि काम ऐसा होना चाहिए। सबको साथ में लेकर चलने का काम सबने नहीं किया। मैंने देखा नासिक में हजारों लोग, जब हम लोग यात्रा में निकले और वहां का राम मंदिर, जिस राम मंदिर में जाने से लोग कहते थे कि यहां पर ये दलित नहीं जा सकता है, अछूत है, जा नहीं सकता था, भगवान राम ने कभी किसी को अछूत माना? जब भगवान राम ने सबरी को गले से लगाया, जब भगवान राम ने सबरी के जूठे बेरे को खाया, जब कोल की रातों के बच्चों को मां सीता ने अपने आंचल से उनके धूल को पोंछा कामतगिरी में, यह दृश्य दुनिया के किसी भगवान ने प्रस्तुत नहीं किया, केवल भगवान राम ने प्रस्तुत किया था। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए भगवान राम ने त्रेता में काम किया था। समाज को जोड़ने का काम त्रेता में भगवान राम ने किया था। कलयुग में यदि कोई कर रहा है तो डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं, जिसने भारत को जोड़ने का काम किया, समाज को जोड़ने का काम किया, समाज को साथ में लेकर चलने का काम किया, ऐसे डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ को भारत रत्न की उपाधि देनी चाहिए। इतने लोगों को लाकर पूना से, आप आज जब मैं उतरा गोदलिया चौराहे पर और वहां से जब मैंने देखा सैकड़ों लोग इस प्रकार अपने गले में इस पट्टे को बांधकर, MIT के विश्व शांति केंद्र के इस पट्टे को बांधकर चल रहे थे, तो देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे ऐसा लगा कि आज पूना काशी विश्वनाथ की नगरी में उपस्थित हो गया है। और उस समय भी जब अच्छा लगा, जब मैंने गंगा के किनारे हवन कर रहा था, और गंगा के किनारे हवन इसलिए नहीं किया, मैंने हवन इसलिए किया कि ये समाज को जोड़ने का हवन है, समाज को मिलाने का हवन है, हर जाति के लोगों को साथ में लेकर चलने का नियम है। ये काम अवश्य होना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने जैसे भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी में नवनिर्मित मंदिर के सामने सुंदर हवन करके दुनिया के लोगों को जगाने का काम किया, वैसे ही अयोध्या राम की जन्मभूमि पर भगवान रामलला 2024 के 14 जनवरी के बाद विराजमान होने वाले हैं। जब अपने नव्य भव्य दिव्य मंदिर में भगवान रामलला विराजमान हो जाएं, तो मैं उसके लिए डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ का आवाहन करता हूं कि अयोध्या की धरती में भी ऐसा काम। ये सरजू की पावन धारा गंगा में मिली है, और ये गंगा की पावन धारा सभी नदियों को साथ में लेकर के गंगा सागर में मिली है। गंगा सागर किसी एक नदी का जल नहीं है, हमारे देश की सभी नदियों का जल मिलकर गंगा सागर होता है। मैं चाहता हूं सभी लोग मिलकर आपस में गंगा सागर बनाने का काम करें, और जब गंगा सागर के रूप में समाज का हर व्यक्ति जुड़ेगा, हर जाति जुड़ेगा, हर संप्रदाय जुड़ेगा, हर व्यक्ति जुड़ेगा, तो समाज को एक नई दिशा मिलेगी। तब फिर मोदी का वह नारा चरितार्थ होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस नारे को साथ में लेकर हम सब मिलकर समाज को जोड़ने का काम करें। और भगवान राम त्रेता में जो कहे थे, सकृदेव प्रपन्नाय तमास्मिति च्याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। संसार में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी है, एक बार भी यदि भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसको अपने गले में लगा करके अपना बना लेते हैं। जैसे भगवान राम ने त्रेता में सबको अपना बनाने का काम किया, वैसे इस कलयुग में डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने भी सबको अपना बनाने का काम किया। उसी का परिणाम दिखाई दे रहा है। मैं आज गंगा के इस पावन तट पर आप सबको धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद देता हूं डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ को। इस अवस्था में भी
इतनी अवस्था में भी, सारे विश्व का भ्रमण करने के बाद भी, सबको साथ में लेकर चलने के बाद भी काशी के बाबा विश्वनाथ की इन सीढ़ियों पर पैदल चलकर समाज को जोड़ने के लिए जो यहाँ आए हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्लीज गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अद्भुत, बहुत प्रेरणादायी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच आदरणीय डॉक्टर वेदांती जी। और मैं इस सत्र के अंत में विनती करता हूँ फॉर द प्रेसिडेंशियल एड्रेस अवर रिवियर्ड यूनेस्को चेयर होल्डर प्रोफेसर डॉक्टर 5 मिनट, 2 मिनट का आपका। सो प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी, founder and chief patron MITES MIT and UNESCO chair. मेरे पास ढूंढने से भी शब्द नहीं मिलते हैं। एक अत्यंत हृदयस्पर्शी वचनों के सुनने के बाद आदर भाव, प्यार, एक दूसरे को जानना होता है, लेकिन किसी विषय को लेकर विद द पैशन एंड फायर इन द बेली, ऐसे कहूँगा। रामविलास वेदांती साहब ने इतना सुंदर आशीर्वाद दिया, मैं बोलता हूँ, वर्णन की बात नहीं, लेकिन ये विषय को चालना देने का काम हो गया, ऐसे मुझे लगा। जिसके कारण पूना से संत ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराज के ज्ञान भूमि से देवभूमि तक और देवभूमि से विद्वत जनों की नगरी में काशी विश्वनाथ नॉलेज कॉरिडोर के प्रांगण में अभी अभी हवन पूजन करके यहाँ पर वेदांती महाराज आए और जिस भावना से उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, वो आपको आशीर्वाद है नहीं, मतलब इसका जो संदेश है, टू प्रमोट द कल्चर ऑफ पीस with the appropriate understanding of the role of science and spirituality was the main subject. अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, एक छोटा सा विषय लेकर जिस भगवान शिव जी के इस भूमि में मैंने जब ये पोस्टर बनाना शुरू किया 2-3 महीने के पहले, तो संत ज्ञानेश्वर टू आइंस्टाइन ये तो हमारे जीवन का साधन है, लेकिन जिस भगवान विश्वनाथ के दरबार में इस मंदिर के परिसर में आना था, तो मुझे लगा कि शिव जी का स्थान वहाँ तो होना ही चाहिए। लेकिन नॉर्मली दिस होल प्रोग्राम बीइंग अंडर द यूनेस्को चेयर, वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि किसी धर्म या जाति का, अपने देव देवताओं का वहाँ होना दुनिया में मंजूर नहीं है। तो मैंने उसके नीचे देखा, क्योंकि वी हैव स्टार्टेड द स्कूल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रियलिटी, जैसे आइंस्टाइन ने कहा, स्टॉडिंजर ने कहा, तो मुझे याद आ गई कि शिव क्या है, भगवान शिव की प्रतिमा क्या है। ये उनकी पूजा नहीं हो सकती है, बिकॉज वी हैव बीन स्टार्टिंग एंड आई हैव स्टार्टेड ऑलरेडी MIT स्कूल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रियलिटी, चिद्विलास, चैतन्य स्वरूप है सारा ब्रह्म। तो मुझे लगा कि मैंने नीचे लिखा, ए सिंबल है, ए सिंबल ऑफ द डिवाइन कॉस्मिक डांस। दैवी बोलने से भी कभी कभी चर्चा होती है, इसको धर्म को जोड़ा जाता है। जो लोगों को धर्म का अर्थ ही पता नहीं लगा, इन द वर्ड्स ऑफ विजडम स्पोकन बाय विवेकानंद व्हेन ही सेज, friends, remember,
Religion is nothing but to perform your duty. Duty towards your mother, the father, the family, the society, the nation and the whole world. वसुदैव कुटुंबकम, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अनदर एक वचन है. ये सारे पूरे साइंटिफिक है, तो मुझे इसमें दिक्कत नहीं लगी, इसलिए मैंने वो सिंबल ऑफ डिवाइन कॉस्मिक डांस ये शब्द का उच्चारण करके मैं निश्चिंत हो गया. और जब वेदांती महाराज जी ने आज जिन शब्दों में मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे काम की सराहना करने का भी आशीर्वाद दिया, मुझे इतना ही लगता है कि स्वामी विवेकानंद के शब्दों को सत्य में उतारने के लिए, उस वचन को दिशा देने का कार्य शुरू हो गया. उसके लिए अपन दिल से, जान से, मन की बात नहीं, सिर्फ आत्मा की, दिल की बात भी है. दिल और मन, आत्मा और मन की केमिस्ट्री को जानने का प्रयास है. केमिस्ट्री ऑफ माइंड ऐसे मैं हमेशा बोलता हूँ. मैंने अमेरिका में MIT में देखा था, एंड वेयर आई हैड आस्क्ड द क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ माइंड? क्या आत्मा का स्वरूप क्या है, मन की केमिस्ट्री क्या है? बहुत लंबी बात है, इस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन विजय भटकर जैसे दोस्त, मेरे भाई, इस काम के लिए हमेशा कन्फर्मेटिव टेस्ट करते हैं. मैं अपने बयान से नहीं बोलता, लेकिन मुझे कोई ऐसी बात याद आती है तो मैं विजय भटकर बिकम्स माई कन्फर्मेटिव टेस्ट. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिस्ट. ये गुम्मत का नेचर बना, स्वामी जी बैठे हैं सामने, तो वो स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक लेबोरेटरी ऐसे जब कहा, तो बहुत से दुनिया से लोग आ रहे हैं. अभी अभी थोड़ा पता लग रहा है कि यह ऐसा कुछ है, और भारतीय संस्कृति का, तत्वज्ञान का दर्शन दुनिया के सामने रखने का ये प्रयास है. तो मैं फिर से हमारे वेदांती महाराज को प्रणाम करता हूँ. अयोध्या से रामेश्वर भी आए थे, रामेश्वर टू अयोध्या ऐसा भी हुआ है, तो मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको. धन्यवाद स्वामी जी. थैंक यू सो मच. जोरदार तालियों से एक बार स्वागत रिवियर्ड प्रोफेसर डॉक्टर कराड़ से. थैंक यू सो मच. इस सेशन को समापन करने से पहले 2 अनाउंसमेंट है कि एक 10 मिनट का चाय पान का एक ब्रेक होगा, और चाय जो है वो इसी हॉल के बाजू में यहाँ पर मिलेगी, और तुरंत हम 4:25 पर हम यहाँ पर हाजिर होंगे. और अगला जो सेशन है वो काफ़ी आज का आखिरी सेशन, ट्रांसफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज सेंटर्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड इनटू द डिवाइन नॉलेज सेंटर्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. दिस इज अ ह्यूज, ये कराड़ सब की जीवन की एक पूरी एक जो रचना है वो इसी भांति आगे जा रही है. तो इस सत्र में काफ़ी बहुत जबरदस्त वक्ता यहाँ पर मौजूद है. ऑनरेबल डॉक्टर भूषण पटवर्धन जी है, स्वामी आशुतोष जी है, लैरी आजाद जी है, सुनील राय सर है. तो इसलिए आपको एक चाय पान के ब्रेक के बाद तुरंत 10 मिनट बाद यहाँ पर आना है. इस सत्र में सम्मिलित डॉक्टर विलास वेदांती जी, डॉक्टर संजय उपाध्याय जी, डॉक्टर दीपक रानडे जी और गोविंद पालकर जी, इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद. यहाँ पर बैठे उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद. थैंक यू सो मच. कैसा प्रोग्राम रहेगा? मुझे तो यहाँ से तो मैं दिखाना है वो.
evening to every one of you. We are starting with the third session, transforming the pilgrim centers of India, /world into the divine knowledge centers of India. I request all my delegates to please come into the hall, occupy the seats. I request खंडारे महाराज प्लीज एक बार बाहर जाके हमारे सब लोगों को विनती करिए. वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन. आज हमारे बीच उपस्थित है ऑनरेबल डॉक्टर भूषण पटवर्धन सर, चेयरमैन NAC बेंगलुरु. I also invite Honorable Dr. Sunil Rai sir, the Chancellor, University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun, to please come on to the dais. I request Dr. Lari Azad sahab to please come and occupy the seat on the dais. Honorable Dr. Lari Azad ji. I also request Honorable Swami Ashutosh. Swami Ashutosh ji, so please come and occupy your seat. I also request Dr. Edison Samraj ji to please come and occupy the stage. Edison Samraj ji. I request Please. technical team to be ready with the AV and all the biodatas, please. Over to you, Mr. Milind Patre sir. Thank you. Thank you so much. And I just request all the delegates to kindly take your seats at earliest. This is the final session of the day 1 of the 9th World Parliament of Science, Religion and Philosophy. The first day always is very, very greatly important as it begins the ball rolling. And we are ending the day 1 with this session which is the most near and dear to the heart of revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir. The whole journey has started from his vision of transforming the pilgrimage centers. It should not be only the worshipping centers, but it should be the knowledge divine centers. They are Gyan Tirtha Kshetra, not only Tirtha Kshetra, but Gyan Tirtha. So they should inculcate in us the knowledge, and for him knowledge means how to do and how not to do, what to do and what not to do, those guiding principles. So everyone is welcome. All those who are in the hall adjacent to this program venue, they are all requested. All the officials, I request them that please get all those delegates inside. Thank you so much. So with this, we begin the session. As the chairman of this session, Honorable Dr. Bhushan Patwardhan ji, wants to leave to the airport, and therefore we cannot delay further. We have a huge lot of galaxies in this speaker. Honorable Dr. Bhushan Patwardhan ji, Chairman NAC Bengaluru. We have Honorable Swami Ashutosh ji, Urstrabil ji, spiritual guru and founder of Anamay Vedic Ashram, Uttarakhand. We have Honorable Dr. Larry Azad, who is President All India Poetess Conference, New Delhi. We have Honorable Dr. Sunil Rai ji, who is Chancellor, University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. And we have Dr. Edison Samraj ji, who is Director, Oriental Press of Seventh-day Adventist Church, Pune. So please give and Director of Education. Please give a huge round of applause for all these eminent speakers upon the stage. And of course, our Bhishma Pitamaha, Honorable Dr. Revered Professor Dr. Vishwanath Karad ji. In order to know about the theme, इस सेशन का जो थीम है, इसको जानने के लिए है मैं अपने टेक्निकल टीम को कहता हूँ कि इसकी जो थीम वीडियो है उसे रिले करिए. Please play the video. This session is based on transforming the pilgrim centers of India and the world into divine knowledge centers of India and the world. Transforming pilgrim centers of India into divine knowledge centers of India through this Vishwarupa Darshan Manch. The masses of India are deeply pious and firmly rooted in their own Hindu faith.
people of India undertake pilgrimages to holy places with the thought that by gaining the darshan of the deity in the pilgrimage place and giving reverence to the deity, will receive the blessings of the deity and increase their own level of piety. Our entire country, Bharat, functions on this great determination and vision to transform the consciousness of the people of India to a higher spiritual level through gaining awareness in the light of education, true knowledge about the religion, the principles, and awareness of similarity of underlying principles in other faiths. In this session, we will throw some light upon the concept of pilgrims transforming into divine knowledge centers. Thank you so much. In ancient wisdom knowledge system, we always say that sa vidya ya vimukta hai. शिक्षा वही है जो इंसान को मुक्त करे. तो फिर वो शिक्षा हो सकता है यूनिवर्सिटी से दी जा रही हो सकता है वो शिक्षा पिलग्रिमेज सेंटर्स के माध्यम से दी जा रही हो, और माननीय प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी के द्वारा ये शिक्षा दोनों स्तर पर दी जाने की कोशिश की जा रही है. यूनिवर्सिटी में भी अथक स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन का प्रोग्राम चलते आ रहे पिछले 4 दशक से, और वही काम वो और बड़े पैमाने पे रिलीजियस और पिलग्रिमेज सेंटर्स को भी कैसे नॉलेज कॉरिडोर सेंटर्स बनाना, उसी का उद्देश्य है. लेकिन सेशन शुरू करने से पहले आइए हम स्वागत सत्कार करते हैं हमारी जो 40 साल की परंपरा है उसके अनुसार. सो आई रिक्वेस्ट रिवेred प्रोफेसर डॉक्टर कराड सर टू काइंडली फेलिसिटेट एंड ऑनर ऑनरेबल डॉक्टर भूषण पटवर्धन जी, चेयरमैन NAC बेंगलुरु. A very important guest for us, all of us. We are very honored by his presence. So I request everyone to have a huge round of applause for Honorable Dr. Bhushan Patwardhan ji. Thank you so much. Now I request sir to kindly felicitate Honorable Swami Ashutosh ji or Strawbell ji, who is a spiritual guru and founder of Annamay Vedic Ashram, Uttarakhand. Please give a huge round of applause. Now I request to felicitate Honorable Dr. Larry Azad ji, who is President of All India Poetess Conference, New Delhi. तालियों की और तालों की गुंजान रुकना नहीं चाहिए. जोरदार तालियों से स्वागत सत्कार. Thank you so much. Now I request to kindly honor and felicitate Honorable Dr. Sunil Rai ji, who is the Chancellor of University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. Thank you. And finally, I request sir to kindly felicitate and honor Dr. Edison Samraj ji, who is Director, Oriental Press for Seventh-day Adventist Church, Pune, and Director Education. Thank you so much, everyone. Thank you so much. So today we are really honored with the presence of a very eminent personality from the field of education and Ayurveda in India. It's a very rare combination. We have got Dr. Bhushan Patwardhan ji, who is the current chairman NAC Bengaluru. Let me introduce him in very brief. Dr. Patwardhan ji is a biomedical scientist who is a fellow of National Academy of Sciences and National Academy of Medical Sciences, India. Currently he is chairman, additional charge, Indian Council of Social Science Research,
New Delhi, and membered National Board of Examinations. He has worked on boards of several universities and member of important national committees of the University Grants Commission, that's UGC, Council of Scientific and Industrial Research, Department of Science and Technology, Department of Biotechnology, Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, and Indian Council of Medical Research. He has extensively worked on several policy-making committees and task forces of National Knowledge Commission, Planning Commission, Niti Aayog, and Ministry of Ayush. He has made original contributions and in evidence-based Ayurveda, especially in Ayurvedic biology. Sir, yes, please. And so, ladies and gentlemen, his pioneering work on novel concepts such as therapeutic adjuvants, etc., has been huge accolades. So, please help me welcome with huge round of applause, Honorable Dr. Bhushan Patwardhan. Thank you, sir. Namaskar. Let me first, I have no actually words, enough words to say what I want to say. What I am witnessing today here is not only divine experience, but an experiment and model which I remember Dr. Karad presented it when the new millennium was coming up. When Indian Science Congress convention was happening in Pune, he dreamed the same vision what is being presented in this session. How to convert these spiritual centers into knowledge centers, and so he chose Alandi there. And you won't believe that I still cannot forget Dr. Karad. The show on one side there were Nobel laureates sitting, and on the other side there were all saints sitting. Sangam of this spirituality and science actually happened on the bank of Indrayani. And now he has taken from there, from Alandi to Kashi. And this transformation, I was telling him, and he is very modest, he told me that I only pray that the ego doesn't come in between, And I told him that whatever he is doing, he said, I am not doing. So I said that whoever is being instrumental in making you do that Almighty, has chosen him to do this mission. And I salute this mission actually. And I also congratulate him for consistency, because I have been in education for a long time, and I have been in education as a teacher, I have been in education as a regulator, and now as assessor. I have not seen such a consistency for the cause, and that also for the cause for people, for the cause of knowledge, for the cause of society, for the nation, and for the world. Vasudhaiva Kutumbakam, what we talk about, The cause which he has taken is continuously and consistently following tirelessly. Second important thing is this continuing of tradition is also not very common. Means you may see one person has created a huge empire and after him what? Here I could see that the whole generation is committed for the cause. And that is very rare. And when I say generation, not only his family, but his faculty members are also part of that generation. His entire staff is committed for that. And so I was not able to even imagine what it must have taken for all of you to come all the way from Pune and build the whole show here. Because nothing is available here. Everything from PIN, you must have brought it from Pune, and the whole crowd, what has been gathered here, and all of them who have come from different villages, from different spiritual centers, from different walks of life, different thought leaders, spiritual leaders, scholars. This kind of a Sangam is really, really unusual, and so I thought that I was really blessed to be here. I will not speak on the subject much, but whatever I wanted to say, I have written in the souvenir which you will get very soon. But one thing I want to tell you, that the philosophy and
not only thinking about it, but actually practicing it and making it happen. The epitome of that I could see in his idea, and he says that I have not done it. Again, he says the same thing, I have not done it. But when you go in that dome, world's largest dome has become a knowledge center. It has become the world's largest library and the most valuable knowledge resource, And the design of it, if you see, it is such a nicely designed, and I'm sure it must have been inspired, and he followed it and made it happen. He said there is no architect, there was no architect, there was no planning. He sat, he conceived, he imagined, and he made it happen. So these things are possible only for blessed souls. And Dr. Karad, you are indeed a blessed soul. And the work what you are doing is a God's work. This is not a work of a university alone. University, and this university has emerged as a university, a role model university, wherein the ethos, global ethos, are cultivated, nurtured, and transformed, But this is not only about one particular thought process. If you go to that dome, you will find practically all religions combined, all philosophical thought processes combined. And so, the earlier session, what they talked about, his own equation, what he said, Om equal to is equal to MC square, If you read my write-up in the souvenir, you will find that I am basically a biochemist. I come from science. And in that, Alex is sitting here, who was my co-worker. I conceived in 2003, when Human Genome Project was coming up, I conceived a book called Om to Genome, because my work was in genomics, And then I remembered, I remembered that Om to Genome, after these years, I thought that that's not the right title for the book, Because Om to Genome, I talked about that time because the genome was emerging, and I thought that genome is a great thing, but today we know, and so we have changed this name, Genome to Om. So this is completing a cycle. And why Om to Genome or Genome to Om? Because I expressed or I imagined genome representing modern science and Om representing the spiritual and knowledge legacy. If you look at both of them, earlier we used to see philosophy and science were one. Then later on they were separated, Spirituality is the basis of that, or bridge between them. And I remember my hero, and she is a woman, but still she is my hero, Candace Pert. Candace Pert, she wrote a book. She was nominated for Nobel. She could not because of her male boss tried to steal it from her. And she resisted. She resigned as a director of NIH Neurology Institution. And then she is the one who discovered opioid receptors. So you can imagine the level at which she is there. After doing all that great science and neurology, she wrote a book called Molecules of Emotions. And if you ask me to distill that book into one line, which she has not written in that book, I am distilling it out. She is saying in that book that one day will come when we may not require any physical medicine to be taken inside our body to heal. We will sit, we will meditate, and body will secrete. Candace Pert, one of the outstanding neuroscientists who was at NIH, and after she retired, she was influenced by Ayurveda and yoga, and then she founded a foundation called Spirituality and Science, Building Bridges. And now her son, who is a top-class creative musician, is now continuing with that foundation with her thought processes, So this is what is happening all over the world. Consciousness has become one of the top researcher field outside, In India, what are we doing? Why only Dr. Karad has to talk about it? There should be hundreds of more universities and institutions, and students should be coming forward to know what we are really,
because science is able to give you answers, what is the evolution and what are the theories and what, they are not able to really give you many answers, and in search of those big questions, I think this kind of a pilgrimage and knowledge, what Dr. Karad you are doing here in Kashi is extremely valuable. I feel that this thought going to students is extremely important, not only for India, for the whole world, because we cannot get caught into the reductionist scientific approach alone. That is not enough. The reductionist approach which started from Galileo and all other streams, that also is good. Because of that we got all these developments of science and technology. But that is not enough, because the whole and part, both are important. Our focus in technology has gone in parts and we are forgetting the whole. So this effort of yours is going to remind us about the importance of this whole. Whole and part relationships are extremely important, and therefore spirituality, pilgrimage centers and knowledge centers, philosophy, science and spirituality, all these bridges are extremely important in today's world, when the world is getting restless, when the world is getting stressed, when the world is getting violent. Your effort towards peace are going to be extremely useful. I hope that this model of MIT is adopted by many other universities, and it becomes actually core part of our education. Because I don't think educated person is a person which comes with a degree in hand. That may be a degree holder. But that educated person, if that person is not able to understand agonies of those farmers who are making suicides in Marathwada or other regions, what that student is talking about. If that student is not able to appreciate beauty, what kind of student we are creating? So this, our emphasis on STEM in education also is a problem. Because while doing that, we are ignoring humanities. We are ignoring art, we are ignoring culture, and right brain is equally important. So this bridges what you are trying to build in by actually transforming the pilgrim centers, and now you have expanded not only in India but the world into the divine knowledge centers of the world, is a very, very noble cause, and I wish you all the best in that. And I'm sure with your continuous guidance, support, energy, and your entire supporting team, this will only grow. And for that, whatever is needed from my side, I am there at your service. Thank you very much. Namaskar. Dhanyawad. Thank you very much. Please give a huge round of applause for Dr. Bhushan Patwardhan ji. Thank you so much. What a beautiful concept that part is important, but for that part we cannot ignore the whole, because the whole is the complete existence. So thank you so much for these enlightening thoughts. And our next guest speaker today is Dr. Edison Samraj ji, who is the Director of Education of South Asian Division for the 4 countries, India, Bhutan, Maldives, Nepal, and leading 7 colleges, 2 universities and 300 schools. So please put your hands together and once more welcome Dr. Edison Samraj. Good afternoon, and a very blessed afternoon today. Dr. Bhushan, the chairman of the session today, Dr. Vishwanath Karad, the president of the World Peace Center, and the other dignitaries on the dais. Ladies and gentlemen, I want to first of all recognize and acknowledge the importance of what Dr. Karad is doing, not just for India, but for the human race. For the last 25 years, in his journey towards academic excellence, he has taken the mission of MIT to the mission of the world, and he has transformed not only pilgrim centers, but also the classrooms
of MIT into temples of learning. And I really want to first acknowledge that, because today, as it was rightly pointed out by Dr. Bhushan Patwardhan, that part is understood but the whole is misunderstood. And we are to think that we are part of the whole. In fact, Dr. Karad, with your permission, let me tell you this. India is in a whole. I am talking about H-O-L-E. But India must be whole, W-H-O-L-E. And I think that is a challenge that Dr. Karad has taken. He is not just interested in the education of young people only, but in the educating the masses to understand the importance and significance of being whole. So I want to present 3 propositions as a way forward and transforming the pilgrim centers into divine knowledge centers. That is, the first is that we must understand that wellness is a call to wholeness. And wholeness is a call to holy living. And holiness is a pledge to oneness with the divine. These are my central propositions I want to leave for those who want to make India whole. The mandate of wholeness cannot be restricted to only educational institutions. It has to broaden its perspective, and Dr. Karad is trying his best as a single individual, as a family of MIT, to galvanize the forces of development to make this visible and credible in the public domain. And today, the experience in Kashi has reminded me that he is so compelled to ensure that the masses in India are taken together with the mandate of education. And we must recognize this as a very important element. While we are having the 4 Ds governing us, that is decarbonization, decentralization, digitalization and democracy, which is a guiding principle of postmodern thinking. But what Dr. Karad is doing is actually the credo of sustainable development for the entire world. And the inspiration that he has given me has enabled me to develop a curriculum called Green Curriculum. I have developed a green curriculum, Dr. Karad, for your information. And tomorrow is a launching day in Kerala. And we are having all the top educationalists coming there to inaugurate and launch this, because we need a sustainable development for world peace, and that begins with educating our masses and our schools with the peace education that I call it a green curriculum. And I want to underline this because we have struggled on this part of teaching in the classroom things that are only subject related. There are no teachers who have a holistic outlook in the classroom. They teach the subject of physics, chemistry, biology, and whatever subject they teach, but there is nothing beyond the subject matter. The holistic development is to integrate the head, heart, and the hand together and make education sustainable and make education worthwhile and make people understand the dynamics of life. And I believe that what essentially is our concern as this conference is emerging as a milestone event in the turning point is, I think, to transform every classroom also into a temple, every pilgrim center also into a divine knowledge center, because in the transformation process we enable every student and every citizen of this country to move towards holistic development. So I want to offer to you 3 important guidelines that I want to present to this important body. To introduce holistic education with an emphasis to holistic total growth and stewardship of our environment is my first priority. If our young people and our older ones understand the value of stewardship, what is to be a true steward, how is it that we can enable ourselves to be responsible to our environment, that will be my first focus. The second, to make conscious decisions
both at the personal and corporate changes in policy and practice for development and progress. Today, as it is seen that corporates have actually become greedy for money, and here we must foster a green corporate culture that needs to enable itself to reduce its greed and increase its compassion towards equity and responsibility. We do have corporate social responsibility percentages that the industry gives towards development, but that is not enough. I think the equity is not resolved that way, and that is why we have this 30 years ago the UN report on common future has placed sustainable development on the international agenda, because we cannot afford to remain at the corporate level and yet have equity and reduction of poverty. So today, sustainable development must have about 4 to 5 imperatives. It should have moral imperatives, it should have the imperatives of social justice and environmental concerns taken into consideration, and an analysis of this narrative should be leading us to forming sustainable development. And I believe there are 17 goals that the UN has made for that, so we need to embrace technological changes, institutional changes, and industrial changes and social changes in this process. And I think we have to pay attention to ethical and moral values, and we should change the future that is before us. So we need to positively reinforce the ethics and justice and environmental limits to academic and political underpinnings, and understand what is sustainability and what is development. Today, I sense that we have a very erroneous concept of development. Dr. Bhushan, I would like you, since you're the chairperson of the NAC, if you can come up with a concept of development that needs to be reinforced in our education institutions. We start the foundations of teaching what is development, what is progress, what is life for. I think this should be part of our ethos in the education institutions and in the social arena and the political agenda. With that, I want to say this is a great opportunity, a launching pad. And Mr. Sharma is here, the one who is taking care of the media. I think the media in Bangalore, the Director General spoke to me and said, why don't you bring concepts like this that we instill in our young minds and our mass groups on what is development? What is true development? Is it development just talking about the bifurcation between ontological discontinuity between man and nature? No, that is not the Advaita thinking. That non-duality is the cause, most of the causes that we have in development is because they have differentiated man from nature. And that differentiation must be diminished. And to that extent, the mass media can play a transforming role in making things happen. And lastly, but not the least, Dr. Vishwanath Karad, I think today you have brought the right person to give the keynote speaker today, Dr. Karan Singh, whom we met about 15 years back when we had the first World Congress in Pune. And he made the similar points during his first inaugural keynote address. And today I say, though those 5 sutras that he made was very valuable because he outlined the basic dynamics of sustainable development and bringing the whole human family as one big family. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 is 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 is 1. That is Vasudeva Kudupakam. The whole human family is one big family. And sustainable development will be possible only when we have this concept of oneness, this concept of unity in diversity, and looking at the other not condescendingly but as equal partners in the growth story. With that, I would say good, better, best. Never let it rest until the good is better and the better is best. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Okay, thank you. And sir, we wish you all the best for the green curriculum, which is going to be launched tomorrow.
at Trivandrum. Thank you so much once again. And I invite the next keynote speaker today. He is Swami Ashutosh Urstrobel. A very interesting resume, friends. He is a spiritual guru and founder of Anamay Vedic Ashram, Uttarakhand. Ashutosh ji is born in 1954 in Basel, Switzerland. He received diploma in analytical chemistry in 1973, but his deep focus was to yoga and Indian philosophy. So at the age of 10, yoga practice has become a fixed part of his daily routine, and then he was influenced by Maharishi Mahesh Yogi's transcendental meditation, and then he left everything and just tried practicing those things. He came to India then, and since 1996 January he lives in India and is a full-time Indian since 2011, citizen of the India. So with this approach, thank you very much. Over to you, sir. Thank you very much for this nice introduction. Yes, and thank you again for inviting me home, as I said also in Pune. I can only say Dr. Vishwanath, name and form, Vishwanath. That says everything. As I said, yes, I'm living in Kozani, and Kozani is sometimes called the Switzerland of India, but I would say this is actually an insult. You cannot compare the Himalaya to anything, but not only because of majestic value. No, you cannot judge a place only from his looks or from the comfort it has in the hotels or from the climate condition. That is like judging a person for what clothes he's wearing. Can I have the first slides? Now, what is it what makes, for example, India so special, or more than India, the spiritual centers so special? Every one of us and these millions of people who visit these pilgrim centers, they do it because they feel something, they get something. Maharshi explained it once. We have to understand these three levels, and we heard today quite a bit about it. We have the Adhyatmic, we have the Adidevic, and we have the Adibhautik. We heard physics. The physics of Nobel Prize of this year was going to people who declared that actually the universe is just a manifestation of the observer. And that's exactly the important point. Because to understand the softness or the importance of pilgrim center, or why people feel better, is because the pilgrim centers have more levels of Adidevic and more power of Adhyatmic. Because of the long tradition of pujas and worship and meditation, these values have been more lively, and the Adibhautik has become thinner. So the transcendental levels, this Adhyatmic shines more true. That is the important point. Now, to explain these three levels, we know the Adhyatmic we have heard today, unified field. I don't have to go into that. And the Adibhautik we see every day with our senses. But I want to explain a little bit what is the Adidevic. The Adidevic is not yet, with some mathematics they try to understand how the laws of nature come forth out of the unified field. But I want to explain it how Maharishi explained it. Next slide. How Maharishi explained it with a simple flower. He said what we see on the flower, all the petals and leaves and stem and thorns and the green leaf and the pinky petal, this is the Adibhautik. Now the sap, the colorless sap, out of which all these qualities in the flower come, this is the Adhyatmic. Now where is the Adidevic? The Adidevic is the sprouting moment where the intelligence in the sap is manifesting at some space as a leaf, on another as a petal, and a third as a stem, as a thorn, etc. This is that way, that Kriya Shakti. The Adhyatmic is the Gyan Shakti, and this is the Kriya Shakti, the Adidevic. Now, if a gardener has some sick flowers, what does he do? He doesn't go and put a bandage around the leaf. He treats the roots. He puts some manure. Now, is there a way of putting a manure to the world
for a sick world. Is that we know that in the Vedic technologies, we have the kalpa, which gives us the advice how to do the things. Now, if a gardener, for example, wants to make a blue line on the green leaf, then he would have to do something to the seed. Now, for heaven's sake, don't misunderstand. It's an analogy, and I'm not advocating genetic manipulation. Definitely not. Maharishi said GMO is the most dangerous thing the world has ever seen. It's more dangerous than all the atomic arsenals. No, that's not what I'm promoting. Because we have genetic manipulations also in the Ved, but that is not genetic manipulation, but for example, Veda Vyasa in the Mahabharata did with the Kauravas. That was Vedic engineering, not genetic engineering. Veda Vyasa didn't use any gene gun, he used mantras. And the moment we use mantras, we include the laws of nature of the Adidevic. Modern medicine, the reductionistic science, is only on the Adibhautic level. But the Vedic engineering is including Adidevic and Adhyatmic, and we have to use the Adhyatmic also. Because if probably I would have these mantras, exactly pronounce it properly the way Veda Vyasa said properly, I don't think I would produce the Kauravas. Because one needs the consciousness which Veda Vyasa had, that absolute most refined level of the Adhyatmic, that unity consciousness, that supreme level of consciousness, only then it works. Because there is a Richa in the Rig Veda, Riksho Akshare Parame Vyoman Yasmin Deva Dinisha Vishadu Yasta Naved Kim Richa Karishyati. Meaning, if you do not know that level of para, where all the laws of nature, all the devas reside, then whatever you do, whatever pratna, puja, yagya you do, will be not that effective. But if you are on that level of adhyatmic, then it is working. Now the question is there a science in the Vedic literature by which we can change a sick world, a world full of tension? When Maharishi came in the 60s, he found a world of superpowers rivaling, a very dangerous situation. Anytime the Third World War would have broken out. And Maharishi in fact said, if we are not fast enough, if I'm not fast enough, then only 1/3 of mankind will survive. So what Maharishi did, he quickly taught the people, and he tested out, what did Vasishta teach to Ram? Vasishta told Ram, if you have 5% people meditating in your kingdom, you won't have any problem. That is in Yoga Vasishta in the 6th chapter. You won't have any problem. It's an ideal society, no sickness, no akraman from outside, no bad weather conditions, no earthquake for that matter, but we just witnessed a few days ago. So all this is a question of how the laws of nature are nourished, are balanced. The laws of nature mean the Adidevic. If the Adidevic are not nourished properly, are weak, then we have all these problems. So that's why Yoga Vasishta said to Ram, have 5% people meditating. Next slide. Now what happened, Maharishi, is he reached in 1974 the point that he had at least 1%. 11 cities where 1% of the people were practicing TM, and we could see the crime, it goes down. Next slide. Maharishi was very happy, and he inaugurated next year in 1975 the dawn of the Age of Enlightenment. He said, to the window of science, we see a possibility of a new age. Next slide. Now, Vasishta gave a warning to Ram. He said, if the people are not regularly, it will fall back and you will have problems. Next slide. So then he said, you have to have better, to have a group of people, a small group, because you cannot control your citizens 5% or 1%, you don't know what they do tomorrow. But if you have a group of people in your palace meditating and doing advanced techniques like siddhis, like described in the Yoga Sutras and yogic flying, next slide, then you will have no problems. We see also in the Shiva Samhita that if a yogi lifts up, then the darkness of the world will go. So next slide. That indeed, Maharishi in 1976, he started to teach the city to thousands of TM teachers,
And in 1978, we had enough to actually experiment it. Due to time, I just say it quickly. There are many researchers done it. I can give you a PDF with 50 of these researchers. It's absolutely mind-blowing, amazing. So what we have seen here, we went to 5 places on the planet where there was chaos, the proxy wars between the superpowers. And within no time, within a day or two, you could see the difference when our people arrived. 140 here, 160 there, 260 here, 500 here, like that. Immediately, the conflicts cooled down. And unfortunately, next slide, when the people left, now it was scientifically also validated with this, what was it, data bank, next slide. Now, unfortunately, what happens, the moment the people leave, it collapses, exactly as Vasishta was explaining it to Ramji. He said, the moment the people not doing it, it will collapse. And that's exactly what we saw. And this researcher have selected, that was done in Lebanon in 1983. We wanted to see what will be the effect in Lebanon if we have 200 people meditating, doing yogic flying and cities in Jerusalem West, which is about 150, 200 kilometers away from the center of Lebanon. It's an amazing idea. It's a crazy idea. How does this work, for heaven's sake? I will just explain it to you in a moment. But indeed, because we were unlucky for Lebanon, but luckily for scientific research, there were not 200 people available. It was fluctuating between, I think, what was it, 82 to 234. And whenever our people were many, war intensity was less. Whenever our people was less, war intensity was going up. So this was eventually published in the Journal for Conflict Resolution by the Yale University. Now I want to show you one more. Next, when we did the same thing with the whole nation. For 13 years, Mozambique was in a complete chaos, civil war, no food, drought, just the poorest nation on the planet. President Chissano agreed to make the experiment. We sent hundreds of people there to teach 16,000 soldiers. Within 3 months, the nation was turned around. He was invited by President Clinton and he asked him, what for heaven's sake did you do? Because the New York Times had an article headline, Mozambique an African Success Story. He said, I introduced Maharishi Mahesh Yogi's Vedic science and it works. So he came to Maharishi and thanked him. Next slide. Now I'm telling you something, you maybe get a shock. I'm telling you now, you see the elephant has 2 kinds of teeth. Those to chew and those to show. So did Maharishi. Maharishi was also saying to us in private, he was warning us. I remember in the 60s, when we suddenly had the Beatles and thousands of people started to meditate, it was very positive. Maharishi said, no, we will not achieve the goal so quickly, they will try to destroy us. In 1982, in a private meeting, Maharishi told us, what is it but a man cannot get enough? He said, it's power. People sitting in power, the people who control the world, they will do anything to keep it. That's what Maharishi said. Remember in Gujarat, the outbreak of the plague in the 90s? Maharishi said to us in private, this is done by the CIA. They want to destroy India. If you don't believe it, read the books of Rajiv Malhotra. Fantastic research. It is a book called Breaking India. There are organizations behind it. That's why what the work with Dr. Vishwanath Karad does is of utmost importance. We have to hurry to make a smooth transition. What we actually see at the moment is a very dangerous sort of balance game of transition of bad powers starting to lose their grip because of sattva is rising. Now, in this whole time when 9/11 happened, due to Maharishi's teaching ahead, I knew immediately this is a whole fraud. There are no terrorists in that way. The official story was complete nonsense. But for me, the sad story was not what actually happened, but that not more people woke up. Now let's jump to 2006, when Israel attacked Lebanon and Iran should get involved also. Maharishi said the problem is in the United States. Immediately, next slide,
he sent 550 pundits, next slide, 550 pundits to, what happened? Next slide. Next slide. 550 pundits went to, overnight so to say, to Fairfield, Iowa, practicing Rudabhisheks every day and transcendental meditation, yogic flying, supporting, next slide, the 1,600 people which were there already in the dome. Next slide. Next slide. Okay. So now I want to explain you how this actually works, and this is the most interesting part. In 1980, Maharishi explained to us in the Indian Express building, first Dr. Triguna was speaking. Now Dr. Brihaspati Triguna was the most accomplished Vaidya on those days, at least that's Sushma Swaraj presented him to the WHO in Geneva with this title, most accomplished Vaidya of India. He was also sent by Maharishi, requested by Maharishi to go and take care of the problem in Gujarat when the plague broke out. And you know what he did? He did a yagya. Ayurveda is not just replacing paracetamol with Mahasidash and Ganmati. Ayurveda is a knowledge which all other Vedic sciences include, the Adidevic, the Adhyatmic, the Adibhautic, everything. So yagyas is a work of Adidevic. Now, he explained us in this conference in 1980 that, you see, when we eat food, we process it to Rasa, Rakta, Mamsa, Meda, Asthi, Macha, Shuka, and eventually Ojas. Finer than Ojas is Soma. Now, there was a professor, Professor Wallace on stage, he said, oh, can we measure that? Then immediately he said, Maharishi started to speak and said, Soma is neither manifest nor unmanifest. It is the nourishment for the gods. And the gods are starving. What would the Prime Minister do for you if you are putting him in prison and feeding him on dry roti and water? What can he do? So that's what we need, is nourishing the devas with, next slide, with how I found in the Rig Veda, the 9th mandala of the Rig Veda is full of praises of Soma Pavamana and the importance of it. In the 113th Adhyaya, the second Richa, there it clearly states, a man with faith and devotion put inward, this is tapas, meditates, all this, that produces Soma for Indra. I remember it was a Christian priest, a Christian monk, coming to visit Maharishi in Salisbury, and Maharishi told him, it's because of the monasteries in the world that the world is still existing. At that time I did not understand, but after this I understood. Now, next slide. But Maharishi gave us a warning, and that's why I want to show you this. He said in 2004, in a press conference, in a Hindi press conference, he said, if India is not waking up to its Vedic values, to its duty, to its role as the guru of the world, you will be for thousands of years in slavery. I repeat, you will be for thousands of years in slavery. He, at the same time, the big importance, he said, we have to have yogic flyers, we have to have big groups. The way a previous speaker was just mentioning it also, I think, last session. Big groups everywhere who do meditation, who do yoga, who do yogic flying, who do all these techniques to produce enough Soma. Because with that we can remove all problems and we will have an age of enlightenment. Now, next slide. The next slide. And not only that, what Maharishi did for about 10 years, in every pilgrim center, he had Rudabhisheks, he had 66 pandits in every Jyotirling, doing Rudabhishek, yogic flying, meditation every day, 22 pandits in every Shakti Peeth, in every Vishnu Peeth, in the Ashtavinayaks, everywhere in India. Now I want to bring one point. This problem which Maharishi indicated, that we may get into complete slavery, do we see any evidence of that? Well, some people may not like now what I'm going to say. Next slide. When this corona nonsense started, and the simple flu was sold as a monster virus to push a vaccine through,
What we see now in the statistics over the last few years is that in 2020 there were not more people dying. But since the vaccine, especially the mRNA vaccine, is out, people die like flies. The death rate goes up, it is astronomical. Next slide. You see here in all these countries where the mRNA vaccine was implemented, next slide, it's happening. In Japan it's almost going double. And there are now court cases in Japan and in Switzerland and in Thailand, next slide, everywhere. In Australia you see one vaccine, that many hospitals, 2, more, 3, more, 4 vaccines, more hospital admissions. Next slide. Now, were there no voices warning us? Yes, there were voices. Dr. Malone, who was the founder, the inventor of the mRNA vaccine, the moment he got to know that this stuff is not resting in your arm, he said, stop it for heaven's sake, the people will die. He was not the only one. There were hundreds, thousands, Nobel laureates, doctors, nurses, everywhere. Nobody listened, nobody heard it, because it didn't come in the mainstream. Is there another agenda behind? Next slide. Look what the economic forum of Davos, what they are preaching. We have too many people. We don't need that many people in the world. Next slide. Professor Harari. These are things we are seeing coming out of this, I call it the World Evil Forum. There is a power of people who still try to keep it. Next slide. We're just finished. Now this is what they say. Humans must embrace becoming an energy source for IA machines. Well, I would say humans must embrace to become an energy source for the devas. Not IA is the problem. The problem is that we are not being in tune with the cosmic intelligence. It's cosmic intelligence we need. Next slide. They are trying to make us believe that we're having a global warming and carbon dioxide is a big problem. I have nothing against green ecology, definitely not. But in the last 10 years, the Arctic ice didn't melt and the ice bears are happy. That is not told to you. That you only find if you do research. There's a big thing telling you that we have to control, we have to give carbon credit to you. You're not allowed anymore, you watch out. Soon you will not allow anymore to have your cows because they're farting and putting too much carbon dioxide. This is actually the program. But this is not what will be. It will not be like that. Thanks to activities like we have here, thanks to all the people meditating, and now the good thing is that the people are waking up. The world is waking up more than ever before. 9/11 did not wake up the people as much because it only hit one city, but now the world is waking up because people are realizing there's something wrong. Next slide. Because if the WHO is not including Ayurveda, and thanks to the Honorable Prime Minister Narendra Modi, who has opened the center with the WHO in Gujarat, this is a tremendous success. But they have to really do it. If they're only working with allopathy, then we know what sort of catastrophes we are getting. The United Nations, watch this film on the United Nations, then you see the agenda is something else than what you think it is. And all these human rights organizations who have no idea about what human rights are. The human rights is a declaration in the Ved, and that is fully enlightenment. Next slide, the last. So what is the goal? The pilgrim center, which are a channel to nourish these laws of nature, the devas, not 66 pandit, no, we need 1331, having Ati-Rudrabhishek in every Jyotirling, having Shat Shakti in every Shakti Peeth, having Sahasranams in every Vishnu Peeth, in every Ashtavinayak. This will create saints like Kalidas, like Ramanuj, because knowledge is from within. Alpakal Vidya Sapai. That is the knowledge which the Yoga Sutra says, Ritam Paratatra Pragya. This knowledge from within, that has to be awakened. And then we have an age of enlightenment, and we will be nourishing the devas and not the AI computers. They will give us time so that we can spend more time on developing our nervous system to perfection. Last slide. And I want to close with what Bhagavan Manu has said. The people born in this country
They will go out to the world as light, as enlightened teachers, lifting up the world and guiding the world in the right direction. Thank you. Thank you. Thank you so much. Swami Ashutosh ji, thank you so much. Thank you so much. The words of the Sanskrit coming from your, divine sound box was such a huge blessing for each one of us. And there may be many observations about many of the corona pandemic and other things, but you spoke your heart. It was such a beautiful thing to listen to you. Thank you so much again. We have two more speakers, and the next in the line is Dr. Larry Azad. He is the president of All India Poetess Conference, New Delhi, and he is considered among the best known authors and poets in Hindi literature. So, ladies and gentlemen, without wasting much time, there are so much, he has a huge biodata. If I read it, it will take half an hour. So please welcome, a round of applause, Dr. Larry Azad. दोस्तों, सुबह से शाम हो गई। आप लोगों को ये पता है कि आपको डॉक्टर विश्वनाथ कराड कहाँ लेकर आए हैं। जो लोग ये बहुत सुंदर पूना से ये बजा रहे हैं, मैं जो बताने जा रहा हूँ, अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो इसे रिकॉर्ड करे, क्योंकि बड़ी अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुबह से शाम हो गई, अभी तक इसे न जिक्र नहीं किया। आप जिस चीज को बताने जा रहा हूँ, आप इसके लिए एक बार जोरदार ये बजाइए, जो जोरदार तालियां बजाइए। सर, आपको मालूम है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? आप लोगों को मालूम है कि यहाँ क्यों बैठे हैं? दूसरी दुनिया से एक शख्स आया था, आप नाम उसका आप बताएंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं। उसने कहा था कि काशी इज ओल्डर देन हिस्ट्री, काशी इज ओल्डर देन हिस्ट्री, काशी इज ओल्डर देन नोन ट्रेडिशंस, काशी इज ओल्डर देन लीजेंड्स। मार्क ट्वेन नाम था उसका, अमेरिका से आया था, दूसरी दुनिया से। उसने कहा था कि काशी दुनिया में इतिहास से भी पुराना है। आप ऐसे ही नहीं चले आए हैं, विश्वनाथ कराड जी ऐसे ही नहीं चले आए हैं, स्वामी अमरनाथ जी आप ऐसे नहीं चले आए हैं, डॉक्टर पठान आप ऐसे नहीं चले आए हैं, पंडित गाडगिल साहब आप ऐसे नहीं चले आए हैं। गंगा मैया ने आपको बुलाया है, विश्वनाथ ने स्वयं विश्वनाथ को बुलाया है। आप कोई पहले शख्स नहीं है कि यहां आए हैं, यहां बुद्ध भी चलकर आए थे, और बुद्ध से लेकर मैं आचार्य शंकर तक आ रहा हूं। इसके बीच में एक लंबी सूची है जो लोग इस धरती पर आए हैं जहां आप बैठे, जहां आप ये बाजा बजा रहे हैं, जहां आप ये फोटो खींच रहे हैं, जहां आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जगह, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, अब तक लोगों ने किताबों के नाम गिनाए हैं, मैंने उन किताबों को पढ़ा है। ये जो कॉस्मिक डांस वर्ड है, सर इसे रिकॉर्ड कीजिए, किसी बहुत आलिम मौलाना से पूछेगा जो अरबी जानता होगा, बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन। कॉस्मिक डांस वर्ड होली कुरान में आया, रिकॉर्ड कीजिए इसे। कुरान पाक की कई सूरत में लिखा है कि ये सूरज, चांद और सितारे एक परिक्रमा में नाच रहे हैं, यही है कॉस्मिक डांस। आई एम रिसाइटिंग द होली आयत ऑफ द होली कुरान कि ये सूरज, चांद और सितारे एक परिक्रमा में नाच रहे हैं। डॉक्टर विश्वनाथ कराड, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स एंड यू हैव एप्टली चोजन ए वेरी नाइस वर्ड, कॉस्मिक डांस। जब वो डमरू बजा और जब शंकर ने अपना वो नृत्य किया था, ये वही कॉस्मिक डांस है जो आज भी मैनिफेस्ट हो रहा है। एक वर्ड किसी ने कहा था कि सत्य का जो प्रतिध्वनि होती है या सत्य जब दिखाई पड़ता है तो वो
उसका कोई प्रतिरूप नहीं होता, वो मैनिफेस्ट होता है। ये आदि शंकराचार्य ने कहा कि अगर स्वर्ग और काशी को तौला जाएगा तो काशी भारी होगा। ये मेरे शब्द नहीं है, आदि शंकराचार्य के शब्द हैं। इसके लिए महाकवि गालिब ने कहा था, जहां आप बैठे हैं, कि ये काबाए हिंदुस्तान है, काबाए हिंदुस्तान, ये गालिब के शब्द है, महाकवि गालिब के। उस जगह आप आए हैं, कल रात आप आए होंगे, परसों सुबह आए होंगे। जब सुबह भोर में मंदिर की घंटियां बजी होंगी, कुछ भजन की आवाज आपके कान में गई होगी, और गंगा की लहरें, ये आपको यूं ही नहीं आ पाए हैं, आपको बुलाया गया है, किसी खास मकसद से बुलाया गया है। जिस मकसद से यहां पर बुद्ध चलकर आए थे, आलार और उद्रक से शास्त्रार्थ किया, जिस मकसद से मंडन मिश्र आए, जिस मकसद से यहां पर तुलसी आए, जिस मकसद से विवेकानंद आए, और यहीं से जाकर के जब दुनिया की वो शिक्षाएं गूंजी हैं, दुनिया की एक दो शिक्षाओं की बात मैं नहीं कह रहा हूं, विवेकानंद जिनका नाम यहां पर अब तक कम से कम 100 बार लिया गया, उस विवेकानंद को विवेकानंद बनाने वाला ही काशी। सिद्धार्थ गौतम को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अपनी पहली शिक्षा उन्होंने कहां दी? लोग एरोड्रम कहते हैं, विमान पत्तन कहते हैं, ये जगह ऋषि पत्तन कहलाती थी, जहां ऋषि रहा करते थे। कुमारिल भट्ट, आचार्य शंकर वहीं चलकर आए। गोस्वामी तुलसीदास ने राम कथा को लिखने के लिए यही जगह चुनी। तो डॉक्टर विश्वनाथ कराड, अगर यह संदेश दुनिया में इंसानियत को एक करने का, मोहब्बत को फैलाने का आपको देना है, तो आलंदी से चलकर गंगा के तट पर आप इसीलिए आए, आना ही था आपको। पार्श्वनाथ भगवान, यहीं पर उन्हें जो है वो 23वें तीर्थंकर हैं, आप लोग जानते हैं ना। मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी, उसने बड़े दावे से, बड़े जोर से कह रहा हूं, 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के पार्श्वनाथ, यहीं से उन्होंने जो है दुनिया को वो 4 ज्ञान दिया। यहीं आकर के धरती की सबसे सुंदर महाकथा, जिसको पढ़ने से आंखों में आंसू आ जाता है, जिसको सुनने से आंखों में आंसू आ जाता है, जिसके लिए गोस्वामी ने लिखा है कि कहत सुनत आवे अखियन में आंसू, वो यहीं रची गई। जो मैं कह रहा हूं कुछ अलग नहीं कह रहा हूं, वही डॉक्टर करण सिंह ने कहा था, वही स्वामी अमरनाथ ने कहा, वही स्वामी आशुतोष जी ने कहा, वही डॉक्टर विश्वनाथ कराड ने कहा, वही डॉक्टर पटवर्धन ने कहा। नदिया एक घाट बहुतेरा, जाइए ना नीचे, हरिश्चंद्र घाट है। दुनिया का सबसे सच्चा आदमी यहीं आया था। हरिश्चंद्र घाट यहीं पर है, मणिकर्णिका घाट यहीं पर है, 80 घाट यहीं पर है। उन सारे घाटों से पानी पी लीजिए, गंगा ही को आप आचमन करेंगे। और अभी चलकर हम गंगा की आरती भी करेंगे इस सेशन के बाद। ये गंगा, वो कहा था ना किसी ने कि चांदनी निकलती है तो वो किसी गरीब और अमीर का घर नहीं देखती है। सूरज जब निकलता है तो किसी हिंदू मुसलमान का घर नहीं देखता है। जब हवा बहती है तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं देखती है। जब चिड़िया उड़ती है तो वो किसी मुल्क की सरहद नहीं देखती है। जब कोई बच्चा मुस्कुराता है तो वो किसी का दीन और धर्म नहीं पूछता है। ये वो काम डॉक्टर विश्वनाथ कराड ने जो किया है, वो इस धरती पर इतना बड़ा विश्वविद्यालय है। महामना को भी यही जगह मिली। महामना मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय यही बना। ये ज्ञान क्षेत्र बनाने के लिए हमारा यह सेशन है कि तीर्थ क्षेत्रों को ज्ञान क्षेत्र में बांटा जाए। काशी ज्ञान की नगरी थी, ज्ञान की नगरी है और ज्ञान की नगरी रहेगी। ये जहां हम बैठे हैं, ये ज्ञान तीर्थ अपने आप में है। यहीं से ज्ञान की किरणें फूटी और जगत गुरु बना विश्व। विश्व में जो जगत गुरु भारत को कहते हैं, वो कहीं और से नहीं बना था। भारत की प्राचीनतम ये वो न्यूक्लियस है काशी, वो केंद्र है। जब एथेंस और स्पार्टा सो रहे थे, जब रोम का वजूद भी नहीं था,
जब दुनिया में बेबीलोन की सभ्यता भी नहीं थी। ये काशी उस वक्त भी मुस्कुरा रहा था, और वो 2500 साल की नॉन हिस्ट्री यहाँ पर जो है वो, जैसे हम आप बैठे हैं इसी गंगा के तट पर, इसी गंगा के किनारे एक बड़ी सभ्यता पनपी, फली फूली, और वो आज भी मुस्कुरा रही है, और आप बैठ करके उसका आनंद ले रहे हैं, और आनंद भी कोई ऐसा वैसा नहीं, आध्यात्मिक आनंद ले रहे हैं। ये सारा श्रेय आपको जाता है। हम सब धन्य हैं कि हमें ये दिन आज देखना पड़ा। अगर मेरी आवाज रिकॉर्ड होकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक पहुंचती है, तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा कि जिस निर्माण को आपने किया यहां पर, ये जो काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बना, आज देख करके आप सब लोगों को दिल से खुशी हुई होगी कि कितनी बड़ी चीज इस गंगा के तट पर, इस ज्ञान के केंद्र को, इतनी बड़ी चीज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया। ऐसे और भी सपने उनकी आंखों में होंगे, ऐसे और भी सपने उन्होंने देखे होंगे, लेकिन वास्तव में मैं तो बचपन से आता हूं, काशी का बेटा हूं, गंगा का बेटा हूं। उस हैसियत से मैं कहता हूं कि जिन गलियों से चलकर हम आते थे यहां पर और गंगा के घाट पर बैठते थे, आज ये चीज वास्तव में पूरी दुनिया को देखने के लिए, वर्ल्ड टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन यहां पर हम जब मौजूद हैं तो हमें, मेरे जो यहां पर जो लोग भी हैं वो क्रीम हैं, आप लोग इस पैगाम को लेकर के बहुत दूर तक जाते हैं। ये 1996 से जो मायर से MIT के अंदर वर्ल्ड पीस सेंटर था, मैं उस आलंदी पर आया हूं। मौली के द्वार पर मुझे डॉक्टर विश्वनाथ कराड ले गए। राजबाग में उस निर्माताओं के, राजकुमार के उस कार्य को भी मैंने देखा। मैं तो इन्हें प्रिंस ऑफ आर्किटेक्ट कहता हूं। दुनिया में मैं पढ़ाता हूं क्लास में शाहजहां द मैग्निफिसेंट, लेकिन जब मैं अपनी जिंदगी में सोचता हूं कि मैंने अगर प्रिंस ऑफ आर्किटेक्ट को हिंदुस्तान में देखा है तो डॉक्टर विश्वनाथ कराड। आर्किटेक्चर ऐसा वैसा नहीं कि जो सिर्फ ईंट और पत्थर और सीमेंट और गारे से बनाया गया हो। एक ऐसा आर्किटेक्ट अपनी आंखों से देख लीजिए जो हाड़ मांस का है, जो दिलों को जोड़ता है। आपने ऐसे पुल देखे होंगे, ऐसी इमारतें देखी होंगी जिसको इंजीनियरिंग का नमूना कहा जाता है। अभी कहा जा रहा था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोम, लेकिन माननीय डॉक्टर विश्वनाथ कराड, डोम तो बनेंगे, कभी कुछ सदियों तक रहेंगे। मैंने सिस्टाइन चैपल से लेकर के और बेबीलोन से लेकर के और तमाम डोम हिंदुस्तान के बाहर देखे हैं। उनकी जिंदगी तो होती है 200 साल, 400 साल, 600 साल, 800 साल, लेकिन मैं आज यहाँ पर इस गंगा की पावन नगरी में, इस शिव को इतना मामूली शब्द नहीं है, इसका उच्चारण लेने से मेरे अंदर और आपके अंदर शिव जो है, शिवत्व जो है, वो एक कह लीजिए कि इंसान की रूह की उत्फुल्लता का चरम पराकाष्ठा है, अल्टीमेट है शिवत्व। उस शिवत्व को महसूस करते हुए मैं कह सकता हूं कि आपके जो ये काम है वो उस राजबाग के डोम से भी ज्यादा अमर हैं। यू आर इमॉर्टल, यू हैव इमॉर्टलाइज्ड द आर्किटेक्चर ऑफ, you are trying to make a bridge between the gaps of two communities, two persons, two different cultures, and ये जो एक चीज है कि जिस तरह से इस धरा पर पार्श्वनाथ ने, बुद्ध ने, तुलसी ने, विवेकानंद ने, आदि शंकराचार्य ने और विवेकानंद ने, एक दो नाम मैं नहीं लूंगा, अभी ये तो मैं कुछ बड़े बड़े नाम ले रहा हूं। अगर मैं नाम लेने लगूं तो कम से कम घंटों बीत जाएंगे, सुबह से शाम हो जाएंगे। जिन लोगों ने यहाँ पर, जो भाषा में बोल रहा हूं, इस भाषा का जन्म यही हुआ जिसे आप हिंदी दिवस कह के मनाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी को असली स्वरूप यही दिया था, इसी काशी में। इसी काशी से हिंदी का सबसे बड़ा लेखक प्रेमचंद, इसी काशी से।
एक दो नाम नहीं लूंगा कि जो है वो आपको छोटे मोटे नाम, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, वो आध्यात्म का क्षेत्र हो, इस काशी ने आपको बड़ी मकसद से पुकारा है, बड़ी ललक से पुकारा है। और ये काशी जो है, इसके कणकण में शिव का वास है। वो कह रहे थे ना एक साहब की कणकण में शंकर है। आपको नियति ने इशारा किया, आप सबको, मैं पर्टिकुलरली एक शख्स की बात नहीं कर रहा हूं, हम सभी धन्य हैं, मैं भी धन्य हूं, आप भी धन्य हैं और आप भी धन्य हैं कि हम लोग यहां आए, इस मौके में शामिल हुए। लेकिन एक आखिरी मैसेज है छोटा सा कि हमें यहां से लेकर क्या जाना। ये मेरा भाषण सुन के मत जाइए, किसी और का भाषण सुन के मत जाइए। डॉक्टर विश्वनाथ कराड को जब से मैं जानता हूं, ज्यादा उम्र मेरी नहीं है, आप तो आपने एक सदी देख रहे हैं, मैं इन्हें लगभग एक सदी के चौथे हिस्से से देख रहा हूं। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते। मेरा वक्त खत्म हो गया होगा, मैं बस 2 मिनट आपका ले रहा हूं। एक अभी बैठे बैठे यहाँ पर मैं कुछ चाय पी रहा था, तो एक मैंने यहाँ पर एक शेर कहा था, वो मैं ज़रूर आपको सुना दूंगा। सर, वो आपकी नज़र है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहर इल्म से हूँ, ये भी शहर इल्म है, काशी भी शहर इल्म है। यहाँ पर 1-2 नहीं कई विश्वविद्यालय हैं, BHU, काशी विद्यापीठ, और आप भी आए हैं जो इंडिया का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। खुद आप कम से कम सैकड़ों विद्यालयों के जो चिकित्सा, अभियांत्रिकी, विज्ञान के क्षेत्रों में उनके आप जनक हैं। शहर इल्म से हूँ, विश्वनाथ के दर पे आया। ये कोई मामूली शहर नहीं है, काबाए हिंदुस्तान में इस वक्त हम लोग हैं। शहर इल्म से हूँ, विश्वनाथ के दर पे आया हूँ, लिए पैगामे मोहब्बत तुम्हें देने को आया हूँ। ये ऐसे ही नहीं आए हैं, लिए पैगामे मोहब्बत तुम्हें देने को आया हूँ। कहते हैं लोग जमाने भर की दास्तां तुमसे। इतने लोग आएंगे, अभी 2 दिन ये चलेगा, बहुत सारे लोग बहुत सारी दास्तानें कहेंगे आपसे। कहते हैं लोग जमाने भर की दास्तां तुमसे, मैं सदियों का मुसाफिर हूं, पते की बात लाया हूं। ये 1-2 सदी की बात नहीं है, मैं बुद्ध से लेकर के और विश्वनाथ कराड तक की बात कर रहा था। और विश्वनाथ की धर्म संसद में आज बैठे हो, अब ये द्व्यर्थक शब्द है। डॉक्टर विश्वनाथ कराड और विश्वनाथ साक्षात विश्वनाथ की धर्म संसद में आज बैठे हो। मैं सनातन प्यार की बस बात सुनाने आया। सनातन शब्द इतना मामूली नहीं है, सनातन यूनिवर्सल है। सनातन हवा होती है, सनातन सूरज की रोशनी होती है, सनातन प्यार होता है, सनातन मोहब्बत होती है। सनातन यही धर्म है, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म और कोई नहीं होता है। जहां मोहब्बत है वही सनातन धर्म है। मैं सनातन प्यार की बस बात सुनाने आया हूं। जगत गुरु के वारिसों, सुबह बनारस के साथियों, जगत गुरु के वासियों यानी हिंदुस्तान के वासियों, जगत गुरु के वारिसों, सुबह बनारस के साथियों, गंगा की लहरों से उठता अमृत बांटने आया हूं। ज्ञानेश्वरी की जमी से पावन काशी आए हो, ज्ञानेश्वरी की जमी से पावन काशी आए हो। तनमन संवार लो, सब स्वर्णिम संदेश लाया। न बहको मेरी भारत मां के नौजवानों, कुछ MIT के और यहाँ BHU के विद्यार्थी होंगे, उनकी नजर कर रहा हूं कि न बहको मेरी भारत मां के नौजवानों, मैं तुमको तुम्ही से मिलाने आया हूं। अपने आप से मिलो, पूछो तुम ही हिंदुस्तान हो। और आखिरी बात, आने वाली नस्लें न कोसे हमको ऐ देश प्रेमियों, आने वाली नस्लें न कोसे हमको ऐ देश प्रेमियों। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, यही एक अमन का मंत्र लाया हूं। धन्यवाद। जय भारत। Thank you so much, Dr. Larry Azad ji. Thank you so much. It was indeed a very, very inspiring and thrilling session. And thank you so much once again for that. And the last of the speaker, and he is also a very, very inspiring one. And as we listen to Dr. Larry Azad sir,
Similarly, we also have the last speaker of the day, Dr. Sunil Rai, Vice Chancellor at University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. He was also former Vice Chancellor of the Assam Kaziranga University and Director of Maharashtra IT Corporation, Government of Maharashtra. He is the co-founder of Cambridge Global Partners, Edinburgh, UK, which provides strategic consulting in several industrial and academic organizations, and he has served as commissioned officer in the Indian Navy for 20 long years. So ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Dr. Sunil Rai. नमस्कार। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु, हम सबके गुरु महामना डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर के श्री चरणों में नमन प्रस्तुत करता हूं कि जिन्होंने एक इतना अच्छा आयोजन, जिनकी मैं इनके साथ कभी-कभी राजभवन करना बड़ा मुश्किल होता था कि अब सर किस उसमें और असंभव चीज है, और उसमें मैं कैन यू प्लीज प्ले माय प्रेजेंटेशन काइंडली आईटी टीम, मेरा प्रेजेंटेशन चला दीजिए। I have to take help of the presentation because what a wonderful day we have had, sir. Outstanding speakers right from our keynote speaker, and therefore lest I forget some of these ideas, I am just taking help of PPT to put my thought. Now this, I will divide this into three. One is about why is it, this is a case study, people keep talking of Harvard. आजकल हार्वर्ड की बातें पार्लियामेंट में भी बहुत चल रही, तो हार्वर्ड की लोग बात करते हैं. I think one case study that Harvard perhaps did not write and should write is that of that boy who came from a village called Rameshwar in Latur, Vishwanath Karad, who just came on a cycle, with just a cycle, to city of Pune, became one of the most revered professors of the subject which engineering students like me always used to fear to enter in the class, thermodynamics. And sir had been such a teacher of thermodynamics that he used to walk into a class of thermodynamics. The legend has it that when Professor Vishwanath Karad used to go to his class, to go only with a duster and chalk, and others will carry some books, because those formulae and deductions, you take an extraordinary mind to remember about those 38 deduction steps. And Vishwanath Karad ji would quite simply go onto the board, and like a smooth flow, all the deductions used to come out. This was told to me by your student, who is a Vice Chancellor in United States, who stayed with us for some time, Sir Rao. Then he was the one who was recalling. Now this is a question which one must ponder. Next slide, please. Now this is a question, why is it that this kind of a success story? And look at, after all that, जितना काम इन्होंने सृष्टि के लिए किया है सर ने, उसका अगर 1 करोड़वां हिस्सा भी कोई कर ले तो वो छाती फुला के पूरी दुनिया में घूमेगा, 10 जगह वो उस चीज का बयान करेगा. इनको देखिए आप, वही धोती, वही कुर्ता, वही चप्पल, वही सिंपल खाना, वही सिंपल आचरण. So why is it that this happens? Because जिसकी बात पूरी सुबह से चल रही है, अपने आप से साक्षात्कार, प्रभु से साक्षात्कार विश्वनाथ कराड जी ने कर लिया, और इसीलिए उनके उस पराक्रम से हम सबको इस चीज का फायदा होता हो रहा. और इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट जिसके लिए सर ने आयोजन किया है, इसका द थीम ऑफ G20, और बड़ी खुशी की बात है सर, आपके आशीर्वाद से मैं पौंडीचेरी में था 2 दिन, जब S20 जो G20 का साइंस वाला पार्ट है, तो सर के साथ में अगर काम करो तो दुनिया समझती है कि तुम भी अच्छे साइंटिस्ट हो. तो ऐसा लोग समझते हैं, मैं भी अच्छा साइंटिस्ट हूँ. तो मुझे वहाँ पे इंडिया से कुछ 40 लोग बुलाए गए थे, मैं एक था, और विश्व से बाकी साइंटिस्ट लोग आए थे, और वहाँ पे भी यही बात चल रही थी. और उसमें भूषण पटवर्धन जी जब चले गए थे, हम दोनों साथ थे उस कॉन्फ्रेंस में भी. और जैसा आज सभी वक्ताओं ने कहा है, सर हमेशा कहते हैं कि ये जो
विवेकानंद जी का भविष्यवाणी जो सर हमेशा हम लोगों से कहते हैं, वो पूरी दुनिया से बार बार ये कहते हैं, जो विश्व गुरु की बात है वो सिर्फ इसीलिए है, यही जो प्रश्न है, क्योंकि ये पूरी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम की ही है। जो मोटो है G20 का, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एंड दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। एंड हम लोग उसमें साइंस में क्या चुने? डिक्लेरेशन ऑफ पौंडीचेरी इज कि ये एक साल इंडिया जो नेतृत्व कर रहा है G20 का, पूरे विश्व को बोलेगा साइंस, जो आज हमारे कीनोट स्पीकर साहब ने भी कही, साइंस ऐसी हो जो जनसाधारण के लिए हो, जो सबके लिए हो, एंड इट शुड इन्फ्लुएंस द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड हियर एंड नाउ, टुडे. It has to influence today. So, as sir was saying about artificial intelligence and all that, these are all humbug. And now we are talking about metaverse. We are talking about such kind of technology which actually is more of a fad, unless otherwise there are smiles on everybody's face. Science निरर्थक है, progress निरर्थक है अगर विश्व खुश नहीं है. इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम सर इस बार पार्लियामेंट ने ली है, उसको मैं नमन करता हूं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल डिस्प्ले ऑफ द तीर्थ. ईश्वर ने वरदान दिया है इस भूमि को, भारत को, इसीलिए कुछ भी हो गया भारतवर्ष पनपता रहा. देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके दाहिने तक, क्योंकि तीर्थ स्थानों की तो ये एक क्वालिटी होती है कि वहां आप जाइए तो आपको शांति मिलती है, लिबरेशन की फीलिंग आती है. और लिबरेशन क्या है? व्हाट इज दिस गेटिंग फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ? फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ इज दैट यू वर देयर बिफोर एंड यू विल बी देयर आफ्टर. एंड वंस दिस फीलिंग कम्स टू यू, यू आर द पार्ट ऑफ दैट परमात्मा. एंड दैट इज व्हाई, दैट इज द फीलिंग दैट यू कम. सी हाउ ब्यूटिफुल फीलिंग इज फ्लोइंग इन ऑल ऑफ अस. नेक्स्ट टू दैट, पोएटिक अंदाज में आजाद साहब ने जिस तरीके से काशी का बखान किया, कोई भी हो तो काशी से मोहब्बत करने लगेगा सर. जितनी बखान आपने काशी का जितना किया है सुंदर, और क्यों ना हो, आफ्टर ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग हियर. नेक्स्ट प्लीज. ये एक चीज है जो सब साथ मिलकर के करे, जो वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात है, ये गुरु शिष्य की प्रार्थना है, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, जो हम करते हैं. सहना भवतु सहना भवन्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे. ओम शांति शांति शांति. नेक्स्ट प्लीज. ये उसका उच्चारण है. यहाँ इस काशी नगरी में इसका ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता नहीं है. नेक्स्ट प्लीज. तो अभी जो मैं एक सेकंड पार्ट पे आता हूं, जो सर ने सोचा है, चमत्कार ये है कि जो विश्वनाथ कराड जी आज सोचते हैं वो विश्व 10 साल बाद सोचता है और उसके 10 साल बाद इंप्लीमेंट करता है. आवश्यकता ये है कि उस चीज का इंप्लीमेंटेशन आज हो. अगर तो है ही नहीं, चूंकि स्वामी विवेकानंद जी ने डिक्लेयर कर दिया, हम अगर विश्व गुरु बन रहे हैं, जो होंगे वो तभी होंगे जब ये जो पिलग्रिम सेंटर्स हैं, ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, ये जो बांटने की जो क्रिया है, ये एक पाश्चात्य सभ्यता है जहां ज्ञान को अलग अलग कंपार्टमेंट में बांटा जाता है. ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी, ये मैथ्स. हमारे सनातन में किसी भी ज्ञान को बांटा नहीं गया है. सूक्ष्म से संपूर्ण, संपूर्ण से सूक्ष्म, सब एक है. कण कण में भगवान है. और ये इसीलिए इस चीज को आवश्यकता है कि ये हम पहचाने, जो डिविनिटी है उसको हम समझें. और ये अब समझने की आवश्यकता और ज्यादा पड़ने लगी है जैसे ही मैकेनाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन, और डर लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और अब तो हमें तो हमारी नौकरी खतरे में लगने लगी है टीचर्स को, बाय दैट थिंग कॉल्ड चैट जीपीटी. आप चैट जीपीटी में बोलिए, ये मेरा कल का मुझे लेसन सबमिट करना है, इतना बढ़िया 2 मिनट के अंदर अंदर सारा प्रिंट करके बाहर आ जाता है. जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो आवश्यकता है ये डिवाइन एजुकेशन की. तो स्टडी सेंटर्स और पिलग्रिम सेंटर्स अगर एक नहीं होंगे, जो सर की थॉट है, जो इस सेशन की थीम है, ट्रांसफॉर्मिंग पिलग्रिम सेंटर्स
to divine centers of knowledge. And why? एक छोटी सी जर्नी है from IQ, from intelligence, about भौतिकता से जिसका उल्लेख आज दिन भर हुआ है, वहां से धीरे धीरे आपको एक अपने आप को ऊपर उठाना है. पहले रोटी कपड़ा और मकान, फिर इंसानियत को समझना है, और फिर अपने आप को समझ के ईश्वर को समझना है. So going from knowledge, wisdom to emotional intelligence, to understand feelings of human beings, feelings of animals, feelings of the entire Srishti. Next, please. And only from this combining of IQ, EQ, that will take you eventually to that inner peace. Once you come to the inner peace, only then you will be able to meet the Paramatma. Next, please. Next, please. So the beauty of intelligence, of self-knowledge of the mind and understanding of the essence are the highest forms of spiritual intelligence, which means from IQ to EQ to spiritual intelligence. तो ये spiritual intelligence का कोर्स कहाँ पढ़ाया जाएगा, कौन से कॉलेज में पढ़ाया जाएगा? अभी सर एरिक्सन जी बोल के गए, उन लोगों ने तो ग्रीन करिकुलम बना दिया, बहुत बढ़िया है. स्पिरिचुअलिटी पढ़ाई नहीं जाती है, स्पिरिचुअलिटी महसूस की जाती है, स्पिरिचुअलिटी जी जाती है. स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको ईश्वर के साथ एक होने पर मिलती है. दैट मीन्स दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस. दैट इज वाई डिवाइन नॉलेज. डिवाइन नॉलेज क्यों चाहिए? और अब तो और चाहिए, क्योंकि मशीनें सब काम करेंगी, मशीनें खेत में जा रही हैं, मशीनें ऑपरेशंस कर रही हैं. If all that is happening by the machines, by the artificial intelligence, this is the time when, as a human race, to call ourselves human beings, we have to take care of take recourse to the divine knowledge. Next, please. That is why the centers of divine learning. So this is what was a discussion on why these divine centers of knowledge or divine knowledge centers. Next, please. Here, this is a Harvard's work which I have summarized some 3-4 papers. आप देखिए, आप यहाँ ये डिवाइन नॉलेज की एक पैराडाइम मैंने यहाँ प्रेजेंट की है, जिसमें IQ है वो मटेरियल के बारे में है, how to do things, how to achieve results, finance, marketing, production, all that. Next is EQ, how to understand emotions of people, how to understand society, how to understand why you are doing what you are doing. And finally, the SQ, the real truth. Now, these are the 3 kinds of knowledge paradigms which one needs to transcend as you traverse your journey in your quest. जैसे जो उन्होंने कहा था रिजवी साहब ने तलाश, ये जो ट्रुथ की तलाश है, आप देखिए ब्यूटीफुली व्हेन यू आर एट फंक्शनल लेवल, यानी 25 साल तक या जो लोअर लेवल पे, यू नीड वेरी लार्ज IQ, some EQ and very little SQ. And just imagine, as you rise up in life, as the society starts challenging you with bigger problems, you need more SQ. That means, I have written there, that for people who are leading the center, states, governments, bureaucrats, leaders, they would need almost 70% of SQ. If they don't have that SQ in them, they cannot be the leaders. You will keep on having wars. Swamiji talked about those 5 disturbed areas. What was the need to actually attack Ukraine? And things like that. You cannot justify these actions. These actions cannot be justified. And today Rajaji said in the morning, ये वसुंधरा में there is enough to feed the need of everyone, but there is not enough to feed even greed of one person. And that is what is the beauty of divinity and SQ. So it is the time this spirituality has to be taught. Next, please. It has to be a part of Kalam. You need few of these are the pillars. One is you need the environment, like this Ganga, Nadi, Prakriti, Pakshi. The other is the knowledge, the Vedas, Upanishads, which we have. And the coverage, it covers the entire humanity. And we had been discussing that all spiritual good books are all talking about, and then of course you need the gurus, the disseminators. But for all these 4 things which can be found possibly in other places of learning,
and which only be found more in the pilgrims is the blessings. ये जो ईश्वर का वरदान है सबको नहीं मिलता है जैसे हमारे सर को मिला हुआ है. सर ने तो अर्जित किया है अपने खुद के पुरुषार्थ से. So now these are the 5 pillars I am suggesting. Next please. Next please. So I am suggesting a scheme that we can have a National Divine Knowledge Council, and no other place better than the World Peace University under guidance of Sir to actually own that, which will have these divine knowledge centers, which will be all the pilgrim centers, and already we have academic training organizations. Next please. Next please. So now what will this divine knowledge council do is to set up like how we are discussing today. There will be a declaration of this event that becomes the guideline for the rest of the humanity as to how to manifest spiritual learning. The divine knowledge centers should have these kind of frameworks, curriculum, promoting research material, etc. So Kashi, Ajmer, and all the pilgrim centers should have this kind of paradigm, and academic institutions should collaborate. Next please. So we can have these various categories for students, for means everybody should go, should be subjected, should be engaged in spiritual learning process, which can happen in the pilgrim cities, pilgrim places like this, and it should be a collaborative execution, which means if somebody has spent some time learning spirituality here, should be given some credits which are recognized by the entire education system. Time has come that we need to do this kind of a thing, unless otherwise, and पठान साहब और मैं बात कर रहे थे कि ये बात कही गई थी कि मजहब के बिना शिक्षा भी क्या शिक्षा होगी. अगर जब तक पहले सर ने कहा था, previously kings and leaders were guided by gurus, sages and saints, and that is why the kingdoms were like this. Unless otherwise these politicians are guided by spiritual gurus, we will continue to have problem, we will continue to have greed, and therefore we have to have these pilgrim centers or divine centers. Next please. And this is Abhar and Dhanyavad. And Dhanyavad is to Sir to give this whole concept of converting pilgrim centers to divine knowledge centers. Sir, aapko naman hai. And thank you very much for giving this. Thank you. Thank you so much. Dr. Sunil Rai, thank you so much. Thank you so much for the scheme you are proposed, sir. And as you are aware probably that in MIT World Peace University already a 12-credit peace syllabus is already being taught to all the 20,000 students of MIT World Peace University. It is embedded into the very curriculum of the university, and the students have to pass the examination, they have to write their assignments, they have to attend the classes. They can fail if they don't attend and if they don't pass the examination. And the subjects are philosophy of science and spirituality, scientific studies of mind, matter, spirit, consciousness, Indian knowledge system, and these are the subjects. So we have already been, embarking on that, and we should clap one more huge time for revered Professor Dr. Vishwanath Karad, sir, for the vision he is already implementing also there. Thank you so much. And so that, with that we are coming to the end of day 1 of 9th World Parliament of Science, Religion and Philosophy. But before we conclude the day, may I request if Revered Karad sir wants to end the day with some remarks? Okay, thank you. Thank you so much. And so, Kiran Kumarji, yes. So we have got very eminent guest tomorrow, and there are many sessions tomorrow. Dr. Kiran Kumarji is with us, a very, very senior official from from ISRO. And thank you so much, sir, for being here. And there are many luminaries here. Dr. Rajendra Shendeji is with us, and Dr. Alex Sankeyji is with us, and Dr. Rajendra Dikshit is with us, and there are many eminent speakers also here. So before Pasayadan, the Vishwageet, I just want to make an announcement for tomorrow's very unique program, and Karad Sarji calls it as the Divine Blessing Ceremony. So tomorrow's first session will be Divine Blessing Ceremony from 9 a.m. onwards, and there will be various great luminaries from each religion
and they will be just within a short time of 2 to 3 minutes will be presenting some basic fundamental principles of their respective religion. And then that session will be followed by a great session again, and in that Mahamahim Arif Muhammad Khan ji, the Honorable Governor of Kerala, will be the guest speaker there, and the session will be religious scriptures are true life guiding scriptures, Ekam Sat Vipraha Bauddha Vadanti. So Honorable Dr. Arif Muhammad Khan ji will grace us with his presence tomorrow. So tomorrow from 9 a.m. to 10:30, this great session will be there. So each one of you are requested. From 9 a.m. to 10:30, Divine Blessing Ceremony, and 10:30 to 11:30, Ekam Sat Vipara Bauddha Vadanti, and the keynote speaker is Dr. Arif Muhammad Khan ji. So with that we come to the end of the session. विश्व गीत ज्ञानेश्वर मावली का पसायदान, इससे ज़्यादा और बेहतर कोई संगीत हो नहीं सकता विश्व शांति के लिए।